Hello everyone, good morning. Can you hear me? Good morning. Good morning. Okay. Good morning, sir. So who all are in? Mahesh, Surbi, Priya, Saili. I don't remember. There are two Saili. Saili Bhide and Saili Patil. Okay. Yes. So Saili, I believe you joined last time as well. Saili Patil. I'm talking to Saili Patil. Yes. Okay. So I'm not sure like if you have attended the complete session. No, Last session you didn't attend I'm completely. not attending, but मैंने recording देखी है तो मैंने Okay, session. okay, fine. You are all good now. Yeah. Okay, okay, yeah. Thanks, Saili. What about Saili Bhide? Saili, so is this your first session? Can you hear me, Saili? Yes. Yeah. Good morning. Yeah. This is for my first session. So I'm interested to join the class. So they gave Okay. me this demo session link. Okay, okay. So have you attended demo session and understood like the content and all those stuff? No. This is the one link I got from the office. I mean, I'm This is not the sure this is the only. class or This the is the demo only. session. No, no. Yes. This Yes. is This the is the only link. class. Do we have Oh, Swapnil? so shall I leave or something? No, 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 I no. mean, I don't know. Absolutely fine. No, no, no. That's fine. Swapnil. Okay. I think we didn't forward the Swapnil. You there, right? You didn't forward the demo link. Okay. Okay. So, Saili, that's not an issue. So you can continue. Even Okay. I will try to guide you the basic setup today itself. Okay. Yeah. Sure. Okay. So I think Swapnil just joined. We just had a one session on last Sunday. That was Mm-hmm. the first session, but that was like an introductory session, and we just did the installation. Okay, to check Okay. the to start with the Java, but in Okay. terms of content, we have not yet started. By the way, let me enable my video. Okay, so in terms of content, we have not done anything. Okay, so maybe today will be like the day when we are going to talk about a lot of things about the content in terms of Java. So you will have that understanding. Just have patience. Just give me some time. Okay. Maybe we can sync up after this class as well. Fine. Yeah. Sure. Yeah. Okay. Thanks. Anyone else who is new and first time joining this class? Neha. Neha. Yes, me. Uh, you're joining first time, right? Yes. Um, so, have you attended any or recording? No, Did Swapnil they provide only the? give me this link Okay, yesterday. okay, yesterday only. Okay, fine, that's fine. But the thing is, that would have created your mind if you have heard that. But that's fine. That's not a mandatory thing. We'll talk to Swapnil, and maybe I can provide those link immediately. You can go through. Even after class, I will connect with Neha and Saili. Okay, then we can discuss. How about Anju? Anju, is this your first session? Hello? Can you hear me? Hello? 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 Anju, your voice is too low to hear. Hello? Is Too it low. clear? It's like you're far from the mic. Oh, just give me a 1 minute. Let me Okay. check. Yeah, sure. No problem. Um, yeah. Meanwhile, I see Lalita. Lalita, you are also first time attending, right? Means anything you would like Yeah. to first time, right?
Yes, Master. Have you attended demo? No. Okay. So, so we have 4 new joinee: Lalita, Neha, then Saili, and Anju. Okay. Anyone else? Because I need to like give the background about the course and basic detail at least. Swapnil, can you hear me? Rest of the guys, give me some time. Let's everybody get settled in. Swapnil, but okay, let me call him. Okay, I'm going on mute, guys. Just he's already on another call. So I just wanted to know if anyone else is joining. So that's why like I called Swapnil. I don't want to repeat any like previous thing. And in one go, I can do that. We already have 4 guys. Okay. So to Saili, Neha, Lalita, Anju. So you have missed couple of hours session. Okay, and how that those things will be covered, we'll talk about after immediately after this session, even in the break as well. Okay, so the thing is, um, we started this particular batch last Sunday, and we did the Java and Eclipse installation. How many of you have already Java and Eclipse installed on your system? Okay, you chat channel if you can't speak. I Uh, installed it. okay, so who is this? Surbia. Surbia. Surbi. Okay. 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 For others, it's not there, right? Okay. No, Anju don't have Java and Eclipse install. Anju will do it right now. Don't worry. Setup is done. Saili Patil has done the setup. Okay, fine. Sorry, some problem with mic, Anju. That's fine, Anju. You can always use the chat channel. I always monitor the chat channel for your reply. So that's fine. How about this Saili, another Saili? And how about Lalita? Do you have Java and Eclipse installed? No. Okay, fine, fine. So let me. Rest of the guys have patience. As I need another couple of minutes. Okay, so let me share the link to download. What you need to do, I'm just sharing like all those don't have this setups. So what we did in the last session, we just installed these setups. Okay, we didn't start with any content. You can download 2 folders. You can download 2 folders, and those folders are Java, JDK 1.8, and Eclipse. Okay, so all new joiners, please download JDK-8U and keep me informed. Okay, so what you need to download? JDK-8U star, and the second one would be the Eclipse.
Okay, so just download it, and I will show you like how to install that as well. These are just two setup where you just need to download and just double click on the setup. That's the only thing you need to do. Okay. So, and meanwhile, you can, since that is getting downloaded, meanwhile, you can concentrate on the what we are going to discuss from today on the screen. Let me share my screen as well. Sharing my screen. Okay, I'm sharing my entire screen, and let me know if you can see my screen. Okay, you can see my screen. Okay, so guys, to be honest, what we did in our first session, we did the introduction, and we installed Eclipse and Java. This is the only thing that we have done. Now today our goal is to start with the Java. We have not covered anything from the syllabus, but this is the Java slide. Okay, core Java, and this is our actual content start, and this is where you will start seeing the things in terms of Java. Okay, last time we did the installation, we just checked the installation. Now this is like, this is the content Eclipse ID. Yes, we installed the Eclipse. Eclipse is something which is going to give us a platform where we will be writing the code. This is what we did in the last session as well. We just installed Eclipse and we just tried to check if our Eclipse installation is perfectly done, and at least we can navigate to the basic thing. Though Eclipse is not something which interviewer is not going to ask anything from Eclipse. Okay, even he won't talk about this tool. This is just for our regular day-to-day usage to run the Java and to debug the all our automation scripts as well. Okay, so that's what the goal of the Eclipse. The second is, okay, core Java concept. Okay, so this is what our goal, and what we will be doing in terms of core Java. Prior to that, please everybody, please open the Eclipse on your machine, and for those who are downloading the Eclipse, okay, for them, since you are downloading two files, okay, these are the two files. Let me show you those two files. Okay, so you are downloading these two files. Okay, this JDK 8U and Eclipse. So once you are done with the download, just double click on this JDK 8U. Okay, just double click and click on next, 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 agree, accept, and you will be done with the installation of Java 8. Okay, and then you need to just double click on the Eclipse. The similar way, you need to just install Eclipse. If you have any doubt, do let me know. Do not hesitate. Okay, don't hesitate to ask question. Don't hesitate that you don't know this, because everybody was not aware as well. Okay, so that's okay. So are you done with the? Have you opened Eclipse? Participant kya yaar? Okay, let me close my all. Okay, ठीक है, तो मैं मेरा भी Eclipse open कर दिया. Okay, now see guys, this was the Eclipse that we have installed, which is connected with the Java, and we tried to understand like how to create the new file, how to create the new file project. Okay, and
how to at least run our basic program. So this was the Radical Java batch 24, and here we created a simple Java program. I'm just opening the same Java program. Though we don't know Java yet, we do not have any idea about what Java is all about, but we just tried to understand at least how to write the code on this tool, and that is what we have done. Okay, now what is the next goal? Next goal is to start learning Java, and that's what we are going to start. Okay, um, let, let's try to understand what Java is. Everybody already know what Java is all about, but still I am reiterating. Okay, Java is a language. Language is formed. Let me simplify it. What is the language? Language, like Hindi, English, Marathi. Okay, it's a language, right? We have words. Each word is having a different meaning when it is combined with the other words. Okay, so if I am saying Java is a programming language, since it's connected with the programming word, the meaning of language is it's like a coding language. My mother tongue, or my main important, like, I don't know what is the other word. Okay, so when we say like we have different languages in India, okay, the meaning of language word is different, right? So depending upon the how we are using other words along with a particular word, the meaning changes, and the exactly same happen with the Java. Java is created with lot of different words. For example, public, static, constructor, class, method, variable. Okay, then abstraction, interfaces. Okay, this Boolean keyword. So we have lot of these keywords. Okay, we have lot of these keywords. When we, obviously all words cannot be used at a time, we need subset of words, and we can form a meaningful behavior. Okay, when we say public static void, having a meaning, some meaning. When we use abstract keyword, with public, having a different meaning. When we use abstract keyword with the private, it is having a different meaning. Okay, if we use int with final, having a different meaning. If we use just an int, having a different meaning. So we are going to actually understand all this keyword, and that's what going to form a language. Okay, so you will come across, we will be learning all these words, and ultimately we will be in position to say yes, we understood this language. Now what happens in the interview? Let me tell you, interviewer is always going to ask something from all these keywords and combination of keyword, and he will try to give you the uh, like a googly, which you need to find out like what will be the probable solution. So that's why like understanding the keyword is the most important thing, and their combination, and that the combination is called as literals. Okay, so these are the technical word. Anybody is going to ask about this, like how many keywords are there, nobody is going to ask you. This is for our understanding purpose. Okay, and this was our first program. You can see we have used this, all the keywords. Okay, all the keywords that we have used, and this created some meaningful output, and the output was we were able to print. I am running this file again. Okay, so we were able to run the hello Java 8. Now what is our next step? Okay, what is our next step? Let me open the slide. Okay, now let's try to understand what this Java is all about. We have always heard about Java is platform independent language, right? Now since Java is platform independent, now suppose you have downloaded that Java 8. Maybe you can open that Java 8 file where you have downloaded. Okay, so let me open this from my
Google Drive. You have downloaded this Java JDK, right? Can you install this JDK file since Java is platform independent? Can you install this JDK file onto the Linux and Mac box? I'm just waiting for your answer on the chat channel. Let's try to understand. Let's try to figure out how this Java is platform independent. No, again, nobody is going to ask this in question in the interview, but let's try to understand. क्या आ रहा है यार? End meeting to all ये क्या है? I don't know. Cancel. Okay, chat channel open कर रहा हूँ मैं. क्यों नहीं कर सकते इंस्टॉल यार? क्यों नहीं कर सकते? Java is platform independent, right? Then we downloaded it from for Windows, correct, Vikrant? So it may not open Linux, correct? Okay, fair enough. This is for Windows, right? Thanks, Mahesh. Okay, absolutely fine. This Java, no idea. Fine. Let's have an idea in next 10 minutes. See, Java JDK होता है और JRE होता है. जब JDK बोलते हैं ना उसमें ऑलरेडी JRE होता ही है. व्हाट इज ये है जावा डेवलपमेंट किट. JRE का मीनिंग होता है जावा रन टाइम किट. नाउ ये मैं डायग्राम से दिखा था. ये डायग्राम मैंने कहीं से तो उठाई थी लॉन्ग टाइम बैक, but I like this diagram because this is clearly denote what is actually happening. Okay, so let's try to understand. ये complete जो दिख रहा है ना, ये JDK for example, but it's ये जो नीचे वाला स्क्वायर बॉक्स छोड़ के एक्चुअली सब कुछ JDK. ओके, JDK इंक्लूडिंग दिस, ये लास्ट वाला हार्डवेयर प्लेटफॉर्म छोड़ दो और ये बाकी का सब कुछ अगर आप बोलोगे क्या है तो दिस इज एक्चुअली द JDK. Let's go step by step. What is this Java source code? Java source code is, this is the file that we have written. ये है source code. सोर्स है, जावा का सोर्स है. सोर्स मीन्स दिस इज द एंट्री पॉइंट. अगर कोड ही नहीं है तो जावा कैसे यूज करेंगे? ओके, सो दिस इज अ सोर्स कोड. वी प्रोवाइड दिस सोर्स कोड टू द JDK. Anil, we provided this source code to the Eclipse. No, we are actually using Java. Okay, we are actually using Java. How I would come to know? Let me go to this is bit 14 properties. I wanted to show you like which Java we are using. Okay, internally Eclipse बोल रहा है मैं तो भाई एक ब्रोकर हूँ जावा के और आपके बीच में. ओके, बट मैं इंटरनली जावा देखो JRE 1.8 ही यूज कर रहा हूँ. ओके, कंपाइलर बोलोगे इधर भी रहेगा वो. ये देखो जावा. ओके, सो माय पॉइंट इज इंटरनली भी Eclipse. आप बोलोगे मुझे अभी तुरंत कैसे देखना है? होल्ड ऑन, इसकी ये अपन आराम से देखेंगे फिर से एक बार. बट दिस इज माय सोर्स कोड which is the entry point. This is I have written and I have provided to Java through Eclipse. Eclipse is just a medium channel. Okay, and that JDK tool having a compiler. Okay, so last time किसी को याद होगा ना, तो मुझे याद है मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके दिया था क्या कोई कोड लास्ट टाइम? I think Yes. I right? that actually, yeah. Okay, so you can see on the screen. ये last time का ही है 6 तारीख का. Okay, so where I use the same like, okay, sorry, CMD ऐसा कुछ किया था मैंने. ओके, क्यों नहीं ओपन हुआ? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया. हाँ, तो यहाँ मैंने बोला कि जावा सी और उसका फाइल का नाम दे दिया था. ओके, नाउ we already installed Java, so this command prompt know where is my Java, and it compiled and it created a new file with testjava.class. Okay, ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी. Let's open in Notepad. Let's try to understand the basic thing. And I am saying it created another file with .class. Let's try to understand this file as well. पर ये तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ. ये फाइल में पढ़ नहीं पा रहा हूँ because the contents are different. Because this is compiled version of code. Okay, मतलब मेरा जो जावा कोड था ये था और मैंने जब कंपाइल किया ना उसको तो ये बना.
तो जो दो फाइल मैंने दी ना, बताई ना अभी, मेरा जावा कोड एंड कंपाइल्ड फाइल। ओके, मेरा जावा कोड ये, और ये कंपाइल्ड फाइल किसने बना के दी? ये दिया मुझे कंपाइलर ने बना के, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जेडीके। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? 1 2 3 बॉक्सेस क्लियर? फाइन। नाउ Yes. ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ जेआरई? अभी मैंने जेडीके अनइंस्टॉल कर दिया मेरे सिस्टम से। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने जेडीके अनइंस्टॉल कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये फाइल पड़ी है, डॉट क्लास फाइल। जेडीके अनइंस्टॉल किया और सिर्फ जेआरई किया। आप बोलोगे अपन ने जेडीके अनइंस्टॉल किया है, बट क्या होता है, जो बेस जेडीके है ना, उसमें जेडीके प्लस जेआरई आ जाता है, बट देर इज अ सेपरेट जेआरई एज वेल विच वी हैव नॉट डाउनलोडेड। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने को कोड भी लिखना है ना, राइट? अपने को बनी बनाई डॉट क्लास फाइल नहीं मिलने वाली, तो अपने को कोड भी लिखना है, इसलिए अपन ने ये डाउनलोड किया है। ओके, जिसमें जेआरई भी है। बट एज्यूम करो मैंने जेडीके जो इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम, वो अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद जेआरई डाउनलोड किया ओरेकल के वेबसाइट पे जाके, एंड देन आई इंस्टॉल्ड जेआरई, एंड देन आई ट्राइड टू रन दिस डॉट क्लास फाइल, इट विल रन। दैट फर्स्ट यूज केस कि मैंने जेआरडी से मतलब डिपेंडेंसी हटाई। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इफ आई कॉपी दिस फाइल and provide it to a person who is using Linux machine. Okay, he also able to run this file provided what he has to have. उसके पास क्या चाहिए कि जो रन कर पाएगा वो ये फाइल? क्या चाहिए उसके पास? जेडीके। जेडीके क्यों चाहिए उसके पास? उसके पास वो बनी बनाई कंपाइल्ड फाइल। करेक्ट विक्रांत, यू आर राइट। ओके, जेडीके क्यों चाहिए? क्यों? जेडीके तो कंपाइल करने के लिए लग रही है, बट उसके पास सिर्फ मिनिमल रिक्वायरमेंट है, उसको जेआरई चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने भी जेडीके तो निकाल दिया है मेरे मशीन पे, बट मैंने अभी जेआरई डाली। ओके, तो ये कंपाइल्ड फाइल जो कंपाइल किसी भी मशीन पे करो, आप लिनक्स पे जाके करो, मैक पे जाके करो, या विंडोज पे करो, ये फाइल किसी भी मशीन पे चल सकती है एज लॉन्ग एज दैट मशीन इज हैविंग जेआरई। बट all JRE with respect to operating system have a different setup. JRE का बनाया हुआ है सेटअप विंडोज के लिए अलग, JRE का सेटअप बनाया है मैक के लिए अलग और लिनक्स के लिए अलग। और इस तरीके से जावा ने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Each machine needs to have JRE installed and which needs to be downloaded from Oracle. मतलब सबको अपना अपना Oracle JRE लेना ही है, बट कंपाइल कोई भी करके रख सकता है। मैंने कंपाइल की फाइल, ये फाइल मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सी मेरी ये कंपाइल्ड फाइल है ना, ये कोई भी यूज कर सकता है, मैक वाला भी बंदा और लिनक्स वाला भी बंदा। ओके, क्लियर गाइस? कंफ्यूजिंग हो रहा है? कंफ्यूजिंग हो रहा है? कंफ्यूजिंग नहीं है, ये देखो यहाँ है, जेआरई चाहिए रन करने के लिए, सिर्फ जेआरई है सारे प्लेटफॉर्म पे, बट किसी को तो कंपाइल करके फाइल देनी पड़ेगी। कोई भी कर सकता है फाइल कंपाइल एक बार, फिर वो सब मशीन पे चलती है। दैट्स व्हाट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लॉजिकली Java is platform dependent because we cannot use same setup on all the machine, but Java made sure that it is having a respective JRE on each machine, and it will execute the code which is compiled on any machine. Compiled मतलब क्या होता है? ये जावा बाइट कोड कंपाइल मतलब क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज में चला जाता है, दैट विल बी अंडरस्टैंड बाय द प्लेटफॉर्म, मशीन लैंग्वेज। ठीक है? ओके, नाउ ये इंटरव्यू में कोई पूछने वाला है क्या? हार्डली देयर वुड बी एनी चांसेस। इफ यू आर अ फ्रेशर, you might be asked with this question. If you are a fresher, this may be your first question, starting question. For senior guys, interviewers do not have time to ask this basic thing. Interviewers is going to start interview if you are having a couple of years of experience. Interviewer is going to start Java from OOPS concept itself, and he may end up on the collection framework.
Okay, for Java, I'm just talking about Java, because consider he has to ask you, if you are automation engineer, he has to ask you, try to understand Java, Selenium, then automation concept as well. Selenium and automation concepts are distinct. Selenium is a tool. Automation concept, then web services automation, then little bit about DevOps or Jenkins or Maven, Git. He has to cover 5-6 tools and technology. Okay, so he will may get 5-10 minutes to ask you on the Java. So he is not going to ask this. He is going to ask you the one of the most difficult question. If you are able to answer that difficult question, this means that he should go for the next technology. Okay, so that's what's going to happen. For fresher, yes, this is something which will be asked. There is a probability. For others, there is no probability, but we should be aware like how it works. Okay, guys, all good? ये स्लाइड शेयर करने वाला हूं मैं, सारे मेरे स्लाइड प्रोग्राम सब कुछ शेयर होने वाले. ओके ओके, थैंक यू सुरभि, थैंक यू सुप्रिया. ओके, सो दैट्स व्हाट दिस लैंग्वेज इज ऑल ओवर. तो अपना गोल क्या है? अपना गोल है इस लैंग्वेज का यूसेज इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, हाउ वी कैन यूज दिस लैंग्वेज फॉर ऑटोमेशन. और मैं आज से ही my goal is to involve you, prepare your mindset for the automation from today itself. How? We'll see. Okay, so now the next slide. Okay, ये literals word मैंने बोला, combination of something, few words is something called as literals. Okay, we'll talk this. These are the very basic thing. Even this terms, yeah, programming keywords we are going to use in each and every program. Okay, ये data types है, just ignore all these numbers and all those stuff. No need, nothing to be remembered. Even this is also nothing to be remembered, but you know how to use float, double, long, int. Okay, so over the period of time we will start using this one by one. But these are the data types. What do you mean by data types? Data types is used to store something. What do you mean by store? Suppose आपके marks store करने, marks. Okay, marks is a full integer. Out of 100 you got 90 marks, 80 mark. That is an integer. Okay, that is something which can be stored in int variable. Int is a type. किस type का data है वो? किस type का data है? Try to understand in that front. Now you want to store the percentage. Oh, percentage. See, percentage. You got 88.8%. Okay, where you should store those numbers. Okay, why? Because internally, किसका इलेक्ट्रॉनिक्स था, किसी ने वो 0101 पढ़ा है क्या? 0101, एक देखो, लेट्स गो विद द 8 का सीरीज, 001, 010, 011, 100. वो सीरीज याद है किसी को? पता नहीं किसी को याद है क्या? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पक्का किया होगा यार, इलेक्ट्रॉनिक्स में था. ओके, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट तो सबको होगा, मैकेनिकल का बंदा छोड़ के सबको इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में ऐसा होगा. तो ये वही नंबर है, ये जो 128 रेंज दिख रही है ना, ये वही नंबर है, एग्जैक्टली सेम नंबर है. 2 बाइट मतलब 8 और 8 16 को वो कन्वर्ट करने का 0 0 0 0 0 देन 1, उसका कॉम्बिनेशन. तो जावा ये क्या करता है, जो अपन जो भी डेटा लिखते हैं ना, वो दैट ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज, एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स विल बी स्टोर्ड इनटू द हार्ड डिस्क, राइट, और टीबी आई वुड से. हार्ड डिस्क में ही पकड़ो, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होते हैं ना 0 0 0 0 1, तो वो स्टोर होता है. ओके, सो उसका जो रेंज है ना वो यहाँ लिखा है, और रेंज के हिसाब से उसमें अपन एंट्री कर सकते हैं डेटा की. ओके, तो परसेंटेज है तो अपन यहाँ रख सकते हैं, राइट. देन ट्रू और फॉल्स, कोई चीज मतलब मैच जीती या हारी, ऐसा कुछ है. ओके, इट्स अ बुलियन टाइप. ट्रू और फॉल्स, आजकल टाई भी होते हैं मैचेस. ओके, टाई के लिए इज इक्वल टू है, but boolean, something, a variable which can be true or false. Okay, so अपन इसमें स्टोर कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स. इसमें सिंपल 1 बिट, नॉट इवन बाइट,
तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। बिट क्यों? 0 और 1, फिनिश, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। इसका और इसका रिलेशन कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं इसमें। इवन यू डोंट नीड टू राइट एनी नोट एज वेल। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ very generic. You are going to understand all these things maybe in a like couple of hours. So this is something, the background about Java. Okay, like keywords, JDK, JRE, these are the basic thing. Source code means .java file. Bytecode means compiled version .class file जो किसी भी मशीन पे चल सकती है। ये हो गया बेसिक। Now what is this Java is all about? Okay, ये उसका सिंटैक्स है। मैं बोल रहा हूं जावा में शायद आज भी नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा जावा, एक्चुअल जावा। क्यों? क्योंकि बाकी बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लास। एवरी डे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस क्लास एवरी डे, कि भाई ये क्लास है, ये मेथड है। Okay, so and how it is going to work, what is the class, objects, then method, constructor, then variables. मैं रोज बात करने वाला हूँ। I will make sure that you are very much through with this all terms and their usage. मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड एज यूजुअल। देखो, आपका घर होता है। ओके, यू माइट हैव 3-4 BHK होम। ओके, सो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। Okay, so this is your home, and this home having like some rooms, right? So एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, एक किचन है, ओपन किचन है यहाँ। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ये आपका यहाँ सोफा है। ओके, और ये आपका एंट्रेंस है। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस है। नाउ ओके, ये जानबूझ के मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ। ये कॉमन वॉशरूम है, ये दूसरा कॉमन वॉशरूम है सपोज। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कुक योर फूड इनटू द बेडरूम? कोई है ऐसा कि जो बेडरूम में कुकिंग करता है? कोई होगा तो बताओ मुझे, हमें भी देखना है, मैं भी ट्राई करता। फिर कोई है? ऑब्वियसली आंसर इज नो। कोई नहीं है यहाँ कि जो बेडरूम में जाके फूड कुकिंग करते हैं, राइट? ऑब्वियसली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है उसका कंसेप्ट। ओके, मतलब ये जो किचन है, ये किचन में जाके उसका डेजिग्नेटेड फंक्शनैलिटी उसका, राइट, कि खाना बनाना। ओके ओके, ये आपका ड्राइंग रूम है। इसका फंक्शनैलिटी क्या क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जेनरिक फंक्शनैलिटी बताओ। एक कॉमन प्लेस टू मीट। It's like this is room which can be occupied by the guest, right? जो गेस्ट आएंगे वो यहाँ बैठेंगे। ओके, करेक्ट, राइट। This is a sofa which is present in the drawing room which can be used by guest as well as family member. Agree? Correct. This sofa can be used, even ये टीवी भी, ऑब्वियसली वो टीवी भी कोई भी यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। बट दो भाई है, दो भाइयों का झगड़ा हो गया है। इसके रूम में एक टीवी है, इसके रूम में टीवी नहीं है। ये भाई, इस सिबलिंग्स में भी होता है ना कि छोटा वाला बोलता है मैं दीदी के रूम में जाऊंगा ही नहीं, टीवी देखना ही नहीं मुझे, मेरा झगड़ा हो गया उससे। तो ही वोंट बी एबल टू यूज, और he don't want to use the TV present in other room, right? गेस्ट आते हैं और ये वॉशरूम छोड़ के डायरेक्टली बेडरूम के वॉशरूम में कोई यूज करने जाता है? आपने देखा ऐसा कोई गेस्ट जो बेडरूम में जा गया है, डायरेक्टली आया और बोला मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, एंड ही इज ट्राइंग टू यूज द बेडरूम वाला वॉशरूम? ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन वॉशरूम। ओके गाइज, ओके, could be TV, correct?
Correct. Now my point is, ये जो मैं जो बोल रहा हूं ना, these are all functionalities in Java. Let's go with the detail now. अभी मैं इनको कन्वर्ट करूंगा जावा में. किचन का फंक्शन था कुकिंग बनाना. That is designated functionality which is owned by this room, and this is called as method. In Java, this is called as method. Okay, this is the method. This is also a method. Bedroom, this is also a method. This is also a method, and this is also a method. Okay, then what is this? This is your entry method. Entry means main method. कि जो सबको यहां से ही जाना है, स्टार्ट ही यहां से करनी, मेन मेथड जो हमने लिखी है ऑलरेडी पहली. अभी हम उसको उधर भी जाएंगे. विल ट्राई टू रिलेट दोस थिंग. दिस इज अ मेन मेथड. Don't go with the my this words, but let's try to understand the concept. Forget about this what I'm drawing. Now this washroom is something very private to this room members. Okay, this method is having a private thing, and that is called as private variable. Okay, so ये हो गया. Room is like method, and this is private variable. Okay, ये sofa. This sofa is something which can be used by anyone, even guest as well as the. Okay, this is global, or let's not global, बहुत ज्यादा difficult लग रहा है word. Public variable. Okay, ये public variable हो गया. Getting? किचन का जो भी एक्सेसरीज है वो प्राइवेट हो गया. ये पब्लिक वेरिएबल हो गया. Okay, so I hope you're getting. Okay, now guest cannot access this washroom. Ideally they should be, but depending upon the condition, but they directly logically they are not going to access. That is something which is very private to this room. These are all concept in Java. Consider, आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो. अगर यहाँ कोई गैलरी है या बालकनी है, ओके, आपको डायरेक्टली बालकनी से एंट्री करनी है सीढ़ी लगा के. दैट इज ऑल्सो कंसेप्ट इन जावा. कि if you want to access all these things from the outside world, okay, there is a concept in Java. And what about this your flat or house? This is called as class. Okay, ये होता है Java का class. ये है methods having designated function, and ये variable. ये सब लोग साथ में जब काम करते हैं, okay, then that will form the one base class code. ये कोड बनेगा. इसमें अगर ये सब कुछ लिखा, अपन ने ऑलरेडी ये लिखा है क्लास प्रोग्राम में, जिसको मैंने बताया भी नहीं क्योंकि अपन इक्लिप्स जस्ट चेक कर रहे थे इंस्टॉल हुआ है ना. क्लियर गाइज? दैट इज कॉल्ड एज क्लास. ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्लास. नाउ द नेक्स्ट इज, आपके सोसाइटी में एक ही फ्लैट है. आपके सोसाइटी में और भी फ्लैट होंगे यार, ऐसा थोड़ी है. या हाउसेस होंगे, या एक किसी का 2 BHK, ये किसी का 1 BHK. ओके, फ्लैट है. ओके, these are also classes. These are also classes, and they have their own. अभी for example, few members from this house, this both house, new 2 BHK and 1 BHK house, they want chini, you know, chini shakkar. Okay, sugar from this house, because sugar is finished in their home. They want to access this. You know what they need? They need access to this home. Okay, they need access to this home. Okay, and consider, ये घर के मेंबर बाहर गए, घर लॉक है. इस घर में एंट्री करनी है तो मुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए कि मैं एंट्री कर पाऊंगा इस घर में? मुझे कोई तो चीज चाहिए कि मुझे एंट्री करनी है, इस घर से शुगर लेनी है मुझे. कैन यू टेल मी? ओके, की. ओके, मुझे की चाहिए, राइट एवरीबडी? ओके, की चाहिए मुझे. घर की की मिल गई तो मैं घर का सब कुछ एक्सेस कर पाऊंगा, इवन दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस हाउस. ओके, करेक्ट. दैट्स अ की, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट इन जावा. दैट्स द accessibility point
ऑब्जेक्ट, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्सेसिबिलिटी पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट टू एक्सेस क्लास। नाउ मुझे इतना बात करने के बाद एक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सारा कोड एक ही घर में बैठ के लिखूंगा ना, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं दूसरों के घर में जाऊं, मैं एक ही क्लास में सब कुछ करूंगा। गाइस, that is not going to happen, otherwise your one class will contain million lines of code and you won't be able to find your own code कि कहाँ लिखा है उसी क्लास में। So we need to have the organized way to store the code। आपके घर में कबर्ड में आपने बॉक्सेस बनाए होंगे, राइट? या कबर्ड में सिर्फ दरवाजे खुलो तो डायरेक्ट कबर्ड, ऐसा है क्या? किसी का कबर्ड स्पेशल कबर्ड है कि किसी के पास? पूछ लेते हैं। किसी के पास ऐसा कबर्ड है कि जिसमें सिर्फ डोर है, अंदर में क्या बोलते हैं उसे, वार्डरोब में कोई भी रैक्स नहीं है, ऐसा है? रैक है ना? क्यों किया है रैक्स? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज किया है कि मेरे ऑफिस के कपड़े, मेरे कैजुअल कपड़े अलग अलग जगह रहेंगे, मेरे होमवेयर अलग जगह रहेंगे, राइट? तो सिमिलरली जावा को भी अपना इतना बड़ा कोड लिखना है, किसी काम का एक्सवाइज काम कर रहे हैं अपन, उसका कोड ऑर्गेनाइज करना है ना। वो बोलता है कि मेरा यूजर का, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंकिंग का एप्लीकेशन ले लो, यूजर का लॉगिन का कोड मैं यहां रखूंगा, मैं यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड कोड यहां रखूंगा इस क्लास में, मेरा यूपीआई से और क्या होता है, एनएफटी ट्रांजैक्शन का कोड यहां रखूंगा, क्रेडिट कार्ड का कोड दूसरे क्लास में रखूंगा। गेटिंग? यू कैन हैव डिफरेंट क्लास टू हैव देयर ओन कोड। क्रेडिट कार्ड का कोड है तो क्रेडिट कार्ड का क्लास जाके ढूंढोगे आप, राइट? आपके मामा के आ जाना है तो मामा के घर जाओगे या चाचा के घर जाओगे। गेटिंग? तो that's something which I would like to say कि we need lot of classes. Anil, can you tell me of your project that how many classes you have written in one of the project, any project which was the biggest project? Automation के हिसाब से बता था। So in my one of the biggest automation code, I have written around 800 classes, 800 to 900 classes. In my current project, it's having a different type of configuration, a little bit complex on side, having 400 classes, but मैंने ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम किया जहां 800 to 1000 क्लासेस लिखे थे। ठीक है? क्लियर गाइज? टिल दिस पॉइंट गाइज, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। कोड लिखना इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट। मैं 10 मिनट में जावा का क्लास लिख के ऑब्जेक्ट बता के फिनिश कर सकता था टॉपिक, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड अपने को कोड पे लिखने में एक लाइन का काम है मेरा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको 70-80% भी समझा होगा ना इसमें से, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर मी। आर यू ओके विद दिस? ओके, थैंक्स ललिता, प्रद्युम्न, सौरभ, विक्रांत, पहले भी किसी ने बहुत सारे पिंग किए थे। ओके, अंजू, सबने किया है रिप्लाई। ओके, प्रसाद, ओके, साइली, सुरभि, राधिका, श्रुति, सबने रिप्लाई किया। ओके, सो इफ आई टोल्ड यू, इफ यू ऑलरेडी नो द जावा, you already know the Java, you can skip this session as well, but जिन्होंने फर्स्ट टाइम, जिनको बहुत टाइम के बाद जावा देख रहे हैं, उनको ये पता चाहिए। तो देखो, अभी मेरे पास दूसरे घर की चाबी चाहिए, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए कि उनके घर का किचन यूज करना है। मेरा किचन का गैस खत्म हो गया, इधर गैस है, मुझे ऑमलेट बनाना है। मैं ऑब्वियसली मैं आऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस घर का, इस घर में आऊंगा, ऑमलेट बना के ऑमलेट लेके चला जाओ, इस घर को पता भी नहीं चलेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मेथड। मेथड का काम ही वही है, अपन लिखेंगे छोटी छोटी चीजें। ओके, नाउ ये हो गया, एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है, एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है। आपकी कोई बिल्डिंग होगी, राइट? इस बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, मतलब 30 फ्लैट है उस बिल्डिंग में। दैट इज कॉल्ड एज पैकेज इन जावा, हैविंग अ बंच ऑफ क्लासेस दैट विल बी स्टोर्ड इन कॉमन प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज पैकेज इन जावा। आप फोल्डर बोलते हो, फोल्डर इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है फोल्डर, विंडोज वाला। लिनक्स में फोल्डर ही बोलते हैं, बट इन जावा टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज पैकेज, बट फोल्डर भी कंसिडर करो आपको समझने के लिए। यू मे हैव वन फोल्डर, ओके, हैविंग फ्लैट्स और क्लासेस। कैन वी हैव मल्टीपल बिल्डिंग्स इन योर सोसाइटी? ऑब्वियसली। तो आपकी सोसाइटी क्या हुई? दैट सोसाइटी विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्ट,
and in your area, maybe in my, for example, I am staying in Wakad, we have multiple society, so that is called as my environment having a multiple project. Okay, Java project is something like a society. Clear? So मेरे ये देखो, मेरा वाकड़ एरिया देखना है आपको, ये देखो इतने सारे प्रोजेक्ट है उसमें, ये सब जो दिख रहे हैं आपको लेफ्ट पैनल पे, these are my all the project, and each project, for example, let's go with radical Java. So you can see these are the packages: default, access specifier, control flows, exception handling, my collection, abstraction, interfaces. These are all the packages, and this radical Java is my project. Okay, this is my project. It's like a society. This radical Selenium is my another project having a different use. Clear? बढ़े आगे, बढ़े आगे. Shall I go and open the slide now? Let's try to understand now. Okay? अभी बताओ, ये देखो यही लिखा है मैंने अभी तक जो बात की है ना, सिर्फ जावा के वर्ड है यार, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं. जावा बोलता है कि क्लासेस क्या है, क्लासेस इज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब देखो, ऊपर वाले फ्लैट पे, ऊपर वाला फ्लोर पे भी ये फ्लैट है और नीचे वाले फ्लोर पे भी सेम फ्लैट है, राइट? इट्स अ टेम्पलेट. बिल्डर ने टेम्पलेट बनाया है कि हर बिल्डिंग में एक विंग का फ्लैट सेम ही है. किसी ने घर के अंदर सोफा रखा है, किसी ने चेयर रखे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, राइट? मतलब उनका कन्वीनियंस है कि उनको बेडरूम में क्या रखना है, सोफा रखना है या चेयर रखनी है. ओके, किचन ट्रॉलीज बनानी है या नहीं बनानी है, उनका प्रॉब्लम है, राइट? सो एवरी क्लास इज हैविंग अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन. दैट्स व्हाट मैं, टेम्पलेट है बट वो, देखो टेम्पलेट है, इसीलिए जावा के क्लास को बोलते हैं टेम्पलेट. यूज इट. एंड टेम्पलेट, घर का जो स्ट्रक्चर बिल्डर ने दिया वो टेम्पलेट था, उसको बनाया मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया, कोड इम्प्लीमेंट किया. तो टेम्पलेट क्लास जावा ऑलरेडी अपन को दे देता है, बोलता है आपको जो लिखना है लिखो या लिखो ही मत, आपकी मर्जी. ओके, तो वैसे ही उसमें क्या होता है फिर, डेटा मेंबर. कैन यू टेल मी, ओके, फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट आर द डिफरेंट डेटा मेंबर्स आई हैव डिस्कस? कौन रिलेट कर पाता है, देखते हैं. ये देखो इस डायग्राम में डेटा मेंबर कौन कौन थे. वर्ड चाहिए मुझे, ये वेरिएबल वगैरह ये अपने मुझे घर वाले वर्ड चाहिए, नॉट द जावा वर्ड. कौन से डेटा मेंबर थे? सोफा, करेक्ट. सोफा इज अ माय डेटा मेंबर है, वो घर का मेंबर है एक. ओके, सो ओके, टीवी, करेक्ट. हाउ अबाउट मेथड, कौन से थे? मेथड बताओ कौन से थे? किचन, परफेक्ट. सो गाइस ट्राई टू रिलेट दैट थिंग. ओके, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे. अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट अपन जिस दिन करेंगे ना उस दिन फिर से डिस्कस करेंगे. बट दीज आर द, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम हर कोड में, हर दिन, हर स्क्रिप्ट में, हर जावा के फाइल में ये लगने ही वाली है. इसके बिना जावा बनता ही नहीं, फ्लैट बनेगा ही नहीं जिस फ्लैट में रूम्स ना हो, राइट? जिस फ्लैट में आइटम रखा नहीं उसको फ्लैट बोलेंगे ही नहीं, अपन घर बोल ही नहीं पाएंगे. तो ये चीज चाहिए ही चाहिए. उसके बाद उस क्लास को कुछ मीनिंग है, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग फॉर दैट क्लास. ओके, उसका सिंटैक्स देख लो. सिंटैक्स ये ऐसा लिखा मतलब वो हो गया क्लास. अभी मैं फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा. और ये है ऑब्जेक्ट बनाने का, की बनाने का सिंबल, की मेकर. ये याद रखो, की मेकर. की कैसे बनता है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, आपका नाम, मतलब आप जो नाम दोगे वो, and again class name. Okay, now see, I am going back, I am just trying to understand. ये मुझे, अनिल, I didn't get this class member syntax object, मुझे एक बार लिख के बताओ. करेक्ट, लेट मी. ये बेसिक वाला क्या है? जावा के लैंग्वेज में बेसिक को क्या बोलते हैं? मैंने बताया अभी, बेसिक को क्या बोलते हैं जावा के लैंग्वेज में. ये बेसिक जो चीज बनी है उसमें मैंने बताया अभी. पैकेज, परफेक्ट. इट्स अ पैकेज. परफेक्ट, थैंक्स महेश. इस पैकेज में आई एम जस्ट क्रिएटिंग माय फर्स्ट बेसिक कोड व्हिच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग जावा है. पहला जो कोड लिखा था ना, ये पीछे वाला हेलो जावा, मैं वो सिर्फ इक्लिप्स अपना सेटअप सही है कि नहीं देखने के लिए लिखा था, बट आज का अपना पहला कोड है. ओके, मैं लिख रहा हूं माय जावा फर्स्ट
फर्स्ट क्लास। ओके, जानबूझ के क्लास वर्ड दिया, एनीवे जाने तो, कंफ्यूज ना करना चाहता मैं, डिलीट कर दिया। मैं जावा फर्स्ट कोड लिखता। ओके, एक चीज, हमेशा क्लास का नाम के वर्ड्स का कैपिटल रखो। दीज आर द यूनिवर्सल कन्वेंशन बीइंग यूज्ड बाय ऑल द जावा डेवलपर। हमेशा क्लास में ऑब्वियसली डिफरेंट वर्ड हो गए, स्पेस चलेगा नहीं, बट उसमें हमेशा ट्राई टू यूज कैपिटल लेटर फॉर योर वर्ड। देखो, माई का यम कैपिटल है, जावा का जे कैपिटल है, आणि नहीं लिखा मैंने तो कोई रोकने वाला नहीं है, बट इट्स अ गुड कोडिंग हाइजीन दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द डेवलपर। अगर जावा का अच्छा डेवलपर बंदा है, वो हमेशा कोड फॉलो करता है। ओके, एंड इफ यू वांट टू हैव सिमिलर स्किल सेट, यू ट्राई टू फॉलो मी और दिस कन्वेंशन। ठीक है, फिनिश। लास्ट टाइम हमने मेन मेथड वगैरह क्रिएट किया था, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, पब्लिक, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। क्लास कौन से पैकेज में है, ये पैकेज देखो, यहाँ ये बेसिक पैकेज में है तो इसलिए, दूसरे पैकेज में होता तो उसका नाम होता। ओके, ये क्लास है इसलिए क्लास वर्ड। ये मेरा कन्वेंशन है, मतलब मेरे वर्ड है, चूजन बाय मी, कस्टमाइज्ड है। I can have multiple classes, but this class word will remain same. This public, we have separate slide for to understand the public का है, शायद आज नहीं होगी वो। ये देखो, ये पब्लिक वर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, बट इग्नोर फॉर नाउ। For now, just concentrate on this class because we are not learning that thing. We are trying to learn the class and object. Okay, तो मैं यहाँ जाता, इसमें ये हो गया मेरा फ्लैट के चार वॉल, 4 वॉल ऑफ माय फ्लैट। बट इसके अंदर उसको मीनिंगलेस, राइट, इसके अंदर एक ड्राइंग रूम तो मिनिमम चाहिए। ओके, तो वो है पब्लिक स्टैटिक वाइड। अनिल, ये वर्ड भी मुझे समझाओ। आई विल, बट गिव मी 3 more session, you will understand this 3 word as well. Main, string, ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्या किया मैंने, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ये देखो अपना पहला वाला प्रोग्राम भी था, ये सेम ही था, बट ये मैंने उस टाइम जनरेट करके लिया था, मैंने इस बार जनरेट नहीं किया। ओके, मैंने जनरेट नहीं किया। ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर भी लिख सकते हैं, जावा 7 तक इधर चलता था, जावा 8 से कहीं भी लिखो, इट विल स्टिल कंसिडर्ड एज एरे। एरे भी हुआ नहीं अपना, सो होल्ड दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, मेन। ओके, इस मेथड का नाम क्या है, मेन। जो मेथड खत्म होती है तो उसके बाजू में जो 2 ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर होते हैं वेरिएबल। मैं और एक मेथड लिखता, पब्लिक, एक ऐसा मेथड लिखता जो आपको पता है ऑलरेडी, पब्लिक वॉइड किचन। ओके, देन किचन में क्या होता है, किचन में आइटम, किचन स्ट्रिंग, पैन। ओके, let's try to understand now this as well. This is also my method. ओके, इसके अंदर कोड अभी तक लिखा नहीं, ये 2 ब्रैकेट के अंदर कोड लिखना होता है हमेशा। ये देखो, आप बोलोगे ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, बट वो इसकी है। ये देखो, मैं यहाँ डबल क्लिक करता, हाँ, ये एक और एक चीज याद रखो, ये देखो इस ब्रैकेट, आप, मैं बोल रहा हूँ अभी भी कितने लोग हैं अपने, 15-16 लोग हैं इन आवर बैच। उसमें से बहुत सारे लोग वो ब्रैकेट के चक्कर में ही रह जाते हैं आधा टाइम। उनका ना मेरी तरफ ध्यान होता है ना स्क्रीन की तरफ ध्यान होता है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका होता है। ओके, एक ब्रैकेट डिलीट हो चुकी होती है, कोडिंग प्रैक्टिस, हाँ, एक ब्रैकेट डिलीट हो चुकी होती है और वो ढूंढते रह जाते हैं वो ब्रैकेट कहाँ देने, यहाँ देनी है, कहाँ देनी है। ओके, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। इस ब्रैकेट के नीचे अगर आप क्लिक करोगे इसके एंड में, तो ये बताता है कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ है, ये बताता है इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ है, इसका 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 क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा उसको, मतलब ये प्रॉब्लम है कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था। गेटिंग? सो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट एन a way to find out the problem.
बट एज्यूम करो ये दोनों ब्रैकेट नहीं है, डिलीट। इफ यू वांट टू पुट द ब्रैकेट, हमेशा एक ब्रैकेट ही डालो, एक ही ब्रैकेट डाली, एक ही ब्रैकेट डालो, दूसरा एंटर मारो, दूसरी ऑटोमेटिक आती है, एक इलिप्स ऑलरेडी देते हैं, तो आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। रिपीट करता, सपोज यू आर डन विद दिस कोड, ऐसे राइट कर रहे हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट, और अभी आपको दो ब्रैकेट देने क्योंकि उसके अंदर कोड लिखना है, ब्रैकेट एंटर हिट करो, दूसरी ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें इससे क्या हो जाएगा, आपका कोडिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ है, सिंटैक्टिकल एरर्स, उसमें टाइम नहीं जाएगा, एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये हो गया मेन मेथड, एक मेथड। अभी मुझे किचन में या फॉर एग्जांपल ये मेन मेथड है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नेम स्ट्रिंग सोफा। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया, ये सोफा हो गया। बट व्हाट आई सेड, यार किचन वाला को भी सोफा का एक्सेस चाहिए, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ओके, दैट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, सोफा कोई भी यूज कर सकता है। किचन वाला वेरिएबल, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, क्या सजेशन आ रहे हैं यार, स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू पेन। ओके, नाउ ये दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू किचन एंड दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ओके, कोड नहीं लिखा है यहां, अपन कोड लिखेंगे ना, इफ, ओके इफ ट्रू, ये हो गया कोड उसमें, इफ मतलब एग प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ क्या होगा, सिस आउट प्रिपेयर ऑमलेट। ओके, एल्स सिस आउट आजा भाई, प्रिपेयर मैगी। ओके, गेटिंग, एक प्रेजेंट, ये क्या है, ओके उसको भी लिख देता, बुलियन कंट्रोल है। एक ये आप लिख नहीं रहे हो, रुको अभी, ये तो बहुत, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी अपन लिखेंगे ये बात की बाकी चीजें ना। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट ट्राइंग टू से, कि इसको बोलते हैं कोड इंप्लीमेंटेशन। हम सिर्फ जावा का बेस देख रहे हैं कि हमें क्या लिखना है आगे जाके। गाइस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कोड का इम्प्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं बिहेवियर। किचन में ऑमलेट बनाना इज अ बिहेवियर। ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये दो लोग वेरिएबल है, बट ये वेरिएबल सिर्फ किचन के स्पेसिफिक है, ये वेरिएबल सबका है। ओके, ये मेथड, ये वो मेथड है हॉल वाली, ड्राइंग रूम वाली। ओके, दिस इज हाउ यू राइट कोड, इन जावा। इसमें एक चीज मिसिंग है पूरे इसमें, कौन सी चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक चीज नहीं दिखाई अभी तक। एनी गेसेस? नो, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने अभी तक। कॉलिंग मेथड, ओके, वो तो बहुत आगे की बात है, कॉलिंग मेथड वो तो अभी उसके, बट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्यों, मैं मेरे घर में बैठ के की यूज करूंगा क्या, नहीं, करेक्ट, किसी दूसरे को करना चाहिए ना, मतलब ऑब्वियसली आई कैन क्रिएट, घर में बैठा और नई की बना रहा है, नो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज यू ऑलरेडी इन होम। आपको की किचन रूम में जाने के लिए की क्यों चाहिए, आप ऑलरेडी उसी घर में रह रहे हो। गेटिंग क्लियर? बट व्हाट यू नीड अनदर होम। देखते हैं, मैं ऑब्जेक्ट बनाता अभी, ये पहला वाला प्रोग्राम था, राइट, माय, ये देखो माय फर्स्ट कोड आया इधर, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माय, कॉपी करो, डन, ये हो गई आपकी की।
इसको की लिखता, इसको जो नाम देना है वो दे सकते, की, और फिर उसके बाद की से उस घर में जाना है। कौन से घर में? मुझे किचन वाले घर में जाना है। दिख रहा है किचन? देखो किचन आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस किचन फ्रॉम अनदर क्लास एज वेल। अपन जावा में बैठे हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एंड क्लास। गाइस ये कोड भी लिखना नहीं क्योंकि अपन ये बाद में देखेंगे, बट बाद में डिटेल में देखेंगे। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि जावा क्या होता है, क्लास क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लियर? क्लियर? Okay, so these are the very basic thing which I talked about. Now the thing is what, how, when we are going to study the Java चालू हो चुका है अभी. Now what are the basic thing? कोड क्या होता है? ये कोड क्या होता है? जावा का यही कोड होता है क्या? ये देखो आपको भी क्वेश्चन आया होगा। जावा का कंसेप्ट ये हो गया और जावा का कोड ये हो गया। कोड में क्या लिखते हैं? कोड में क्या लिखते हैं पता है? इफ, एल्स, फॉर लूप, स्विच स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग? इफ, एल्स, फॉर लूप, बिहेवियर जो लिखते हैं ना वो सब इफ, एल्स, फॉर लूप, स्विच, व्हाइल लूप, इससे लिखा जाता है। और ये सारी की सारी चीजें सब लैंग्वेज में है। ये पाइथन में भी है, सी हैश में भी है, सी में है, सी प्लस प्लस में भी है। कॉमन थिंग क्या? इफ एल्स, व्हाट इज दैट? इज कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लोज। ओके, कंट्रोल फ्लोज बोलते हैं, कंट्रोल फ्लोज। तो वो सब लैंग्वेज में है। तो पहले अपन वो लिखेंगे। ओके, सो माय कोड दिस, ये मैं सब सेव कर रहा हूं, बट ये कुछ यूजफुल नहीं है। अभी कुछ नहीं लिखना है। अभी अपन करेंगे इफ एल्स का कोड स्टार्ट करेंगे। ये क्योंकि आपको ये पता चल गया क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये यही लिखेंगे अभी, बट कंसिडरिंग द इफ एल्स। So let's try to understand the if else. Okay, if a particular condition occurs, we need to execute this code, else we need to execute this code. As simple as that. Let's try to write the basic code. मैं लिख रहा हूँ रेडिकल जावा में। ये चलो आपके इसमें लिखता अभी, न्यू क्लास। देखो यहाँ देता मैं। हमेशा वर्ड ऐसे दो जो आप बाद में ढूंढ पाओ। my if else, ओके। उसके बाद अभी ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मैं क्लिक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कौन कॉल करता है? जेवीएम कॉल करता है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हर कोड में ये चाहिए, अदरवाइज उसको पता ही नहीं चलेगा। घर को दरवाजा ही नहीं बनाया और घर के अंदर जाना है, ऐसा हो जाएगा। तो एक कहीं तो पूरे क्लासेस में एक कहीं तो ये मेन मेथड चाहिए। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस सो दैट आई डोंट हैव टू टाइप। ठीक है, मेरा कोड बन गया है। ये कमेंट पार्ट डिलीट कर दिया। ओके, public static, देखो my if else, I'm typing something like this, int I is equal to 10 semicolon if, ओके, मैं ये सबसे बेसिक प्रोग्राम लेता, पहले डिलीट करता। if I is equal to 10, जो सिंटैक्स है उसका, ओके, प्रिंट, सॉरी, sys out। मैं शेल स्क्रिप्टिंग में चला गया। किसी को शेल स्क्रिप्टिंग आती है? वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू, ये भी बताता मैं, ये है i, ओके। एल्स sys out नो वैल्यू। ठीक है, हो गया। तो मेरा पहला if else कैसे काम करता है? राइट क्लिक किया, रन एज किया, देखो आ गया। अगर मैंने इसकी वैल्यू 11 डाली तो सेव किया, राइट क्लिक, रन एज, नो वैल्यू, मतलब ये कोड चल रहा है। ओके, तो एक मिनट, गिव मी सम टाइम गाइज, मैं ऑर्गेनाइज करता कोड इसको। पैकेज का नाम देता कंट्रोल फ्लोज। ओके, कंट्रोल फ्लोज दिया, इस इफ एल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे ना ऑर्गेनाइज चाहिए मेरा कोड। कंट्रोल फ्लोज मतलब इफ एल्स फॉर लूप का कोड यहाँ डालूंगा। देखो ये कंट्रोल फ्लोज आ गया। एक पैकेज क्रिएट किया, कैसे किया? एसआरसी पे राइट क्लिक, न्यू, और पैकेज किया। आपको भी वैसे करना है एक पैकेज कंट्रोल फ्लोज का, जिसमें कंट्रोल फ्लोज, क्योंकि कम से कम 150-200 कोड लिखने वाले अपन जावा की फाइल। ओके,
तो you need to organize that, right? So properly structure बना के करते. तो ये मेरा कोड हो गया रन. ओके, नाउ ओके, अभी अभी आपको क्या करना है, ये कोड लिखना है, उसके बाद अपन असाइनमेंट करेंगे एक इफ एल्स की. तुरंत मैं तुरंत असाइनमेंट दूंगा एंड वी विल बी डूइंग इट इन द क्लास इटसेल्फ. यू नीड टू क्रिएट अ कंट्रोल फ्लोज का एक फोल्डर बनाना है. एक इफ एल्स का प्रोग्राम लिखना है. दिस इज ऑलरेडी शेयर्ड एंड यू कैन सी कि मैंने कैसे लिखा है. आपको क्लास बताया मैंने क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बताया, दो वी आर गोइंग टू लर्न इट अगेन, बट दैट इज समथिंग स्टार्टिंग पॉइंट, तो मुझे बताना पड़ा वो डिटेल में. पैकेज क्या होता है वो पता चल गया है. नाउ यू जस्ट नीड टू चेक हाउ वी आर कैन राइट दिस if else or control flows. This is the first entry point to that to that code. उसके बाद we will write another code for loop and all those stuff. Even we will do the assignment. ठीक है. Now guys, you can start writing this code. You can start writing this code. If you find any problem, do let me know. Now meanwhile, Lalita, who else? Lalita, then Patil, Saili Bide, Anju. Do you have any problem in terms of installation? आप installation किया क्या जावा का? आप enable कर सकते हैं ऑडियो if you want to speak. Yes, आपका Eclipse चालू हो गया? I have a problem. किसको? हाँ ठीक है, चलेगा, देखेंगे. ललिता का हो गया है. ललिता डन. अंजू, बोथ साइली, आपका क्या स्टेटस है? आई थिंक एक साइली का हो गया है, साइली पाटिल का हो गया. दूसरी साइली बताओ मुझे स्टेटस की इंस्टॉलेशन. अंजू, इफ यू कुड शेयर योर स्क्रीन, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं. इफ यू कुड शेयर योर स्क्रीन. मैं मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बट आई वुड लाइक एक्चुअली स्क्रीन शेयर तो करना पड़ेगा ना. ठीक है, बट आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे एक्सप्लेन करोगे आप? मैं स्क्रीन 1 मिनट में शेयर लेता आपका भी. जस्ट इफ सिंस दिस गाइज आर राइटिंग द कोड, I don't want to copy paste this code into the chat channel because this is the first code and I would like you to write the code. I don't have any confirmation from both Saili. Anju, can you tell me your problem? You can take the screenshot and show me what is going wrong. I think I have a problem in memory. RAM कितनी है आपकी मशीन की? मिनिमम 6+ GB RAM चाहिए. सिक्स प्लस, क्योंकि क्या है जावा ही ऑलमोस्ट. लेट मी चेक. ओके, करते हैं अपन वो सॉर्ट आउट करते हैं. अभी तो बहुत टाइम है. दिस ऑल सेशंस आर गेटिंग रिकॉर्डेड. ओके, सो यू कैन विजिट all these sessions again. By the way, Saili and Saili, क्या स्टेटस है? मुझे just I would like to hear if you are getting settled or you are on track or something is missing. कोई हेल्प चाहिए? Hi Anil. Yeah, Saili, tell me. Actually, at my place there is an electricity issue, so I am attending lecture from my mobile. Okay, then what you can do? Okay, you have you done any installation? Yes, yes. Saili Patil, right? Yes. That's fine. Installation is done. Maybe you can attend it. You can even write Yeah, this code once the electricity is back. Okay. Okay. Thanks, Saili. No problem. You continue. Then what about Saili Bide? Okay, I have connected from phone. It was conveyed to me as a demo. I'm traveling. We'll do installation. Okay, Saili. I will connect with you separately. Maybe over the phone. So this is my number. Let me share my number. You call me. First thing is you call me. Okay. After the call, and then we'll connect and we'll sync up before tomorrow's session.
we'll make sure that you have everything which is being done in the class. I told you, like, this is actually our first session. Okay, sure. I think all set. By the way, anyone on leave today? छुट्टी ली है क्या किसी ने अपने ग्रुप से? 19 participant, too much. कितने लोग का हो गया? Swapnil, Vikrant, Surbhi Suni and Surbhi Shringi. 2 Surbhis are there. By the way, I got a call from one of the guy. He is a pharma guy. He's someone's husband. May I know that who is that girl? She has done M.Tech. Is it a Priya? Surbhi. Okay. Sorry, I forgot yesterday. He told me. Okay. ठीक है सुरभि. Okay, we had a quite a long discussion with your husband in terms of like course content, what you guys can expect. Okay, so I hope you're all good now. Okay, so we have 19 attendance is total 19 candidate, 2 from Radical, and even my entries as well, right? 16 है. Facing some error with laptop once started, I will practice the code. हाँ, ये सारे session upload हो जाते, तो you can like repeat the session from the Radical portal. Okay, so that's a very good facility actually. Even if you miss something, it's there, right? It's a really good facility provided by Radical, and this is like this is not a free. Okay, Radical is paying handsome amount, to have such a portal in place, and this will facilitate all the things which is required for the student without any dependency on me. How many of you have done this my if else code? Done. Pradyum done. Saurabh done. Lalita done. Priya done. Done. Prasann. Okay. Now I want. Okay. Mahesh done. सबका done है. कोई pending है? किसको हेल्प चाहिए तो इसके बाद मैं हेल्प करूंगा. नाउ ऑल दोज आर डन विद द कोड. नाउ यू हैव टू राइट अ कोड. ओके, मैं लिख रहा हूं. यू हैव टू राइट. मैं पहले बताता, समझ लो. यू हैव टू राइट अ कोड. राइट अ कोड with if else for below condition. Okay, if interest rate is 7, then print ICICI Bank. Okay, for 8 it's SBI Bank. For 9 it's HDFC Bank. For 10 it's क्या कौन सी बैंक रहेगी? एक्सिस बैंक. ओके, मतलब आपका वो आई अगर 8 है, सेम जो आपका सेम कोड दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर आई 8 है तो आईसीआईसीआई बैंक प्रिंट होना चाहिए आपका कोड रन करने के बाद. अगर 9 है तो एसबीआई, सॉरी 7 से स्टार्ट हुआ ना, 7 को आईसीआईसीआई, 8 को एसबीआई, 9 को एचडीएफसी और 10 है तो एक्सिस बैंक प्रिंट होना चाहिए. ऐसा कोड लिखना है आपको. ओके, यू राइट द कोड and let me know once you are done. I will review the code. देखो, कोडिंग करने आज इसके बाद आपको लग रहा होगा कि यार मस्त चल रहा है, अनिल कोडिंग करते अपन बैठेंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. मैं तो कोड करूंगा बट आपसे कोड करवा के लूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट द गोल इज. अभी तो ये थोड़ा टाइम तो लगेगा सब सेटल होने को, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट नाउ. ओके, मैंने असाइनमेंट दे दी है एंड यू नीड टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट.
How, that you decide. Okay, I just want to see कि क्या कर रहे हो. मैं ये if का बताता भी, ये ऑटोमेशन में कैसे यूज होता है. Let me know if any one of you completed the code. ये मेरा वीडियो चालू है. Okay, let me check. चालू है शायद. Anyone, guys? एक honest request है. Do not Google. गूगल मत करो. गूगल कब करने का? बैच खत्म होने के बाद. मतलब क्लास खत्म हो गया ना, उसके बाद जो पढ़ना है गूगल करो. आई वॉन्ट यू टू थिंक. गूगल है ना, आपको थिंक करने का मौका नहीं देता, सोचने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि आंसर दे देता है ना उससे पहले. आप सोचो, क्योंकि इंटरव्यू में तो गूगल नहीं रहेगा, राइट? गूगल विल बी देयर फॉर यू टू लर्न. योर गूगल इवन विल बी देयर फॉर यू व्हेन यू गेट अ जॉब and you want to do something. Google is there, but unfortunately Google is not there when we are like giving the interviews. उस टाइम गूगल कुछ नहीं कर पाता. सो बेटर लेट्स अवॉइड गूगल एटलीस्ट इन द क्लास. सब कुछ गलत लिखो, गूगल मत करो. आपके पास वो फैसिलिटी मैं ट्रैक नहीं कर सकता, बट आप खुद के साथ ही लॉयल रखो. दैट्स माय सजेशन. गूगल से क्या होगा, आपको इंटरव्यू में बहुत तकलीफ होगी कोड लिखने में, क्योंकि आप गूगल करोगे, कोड कॉपी पेस्ट करोगे. आई वुड लाइक यू टू राइट द कोड. आई वुड लाइक यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रद्युम, थैंक्स प्रद्युम. प्रद्युम डन विद द code. Okay, I will review your code. Is there any facility by which you can share the code with me only? Advanced sharing option देखते ना क्या है. Who can share? All participants. Who can start sharing when someone else is sharing? Okay, host only. Okay. How many participant can? One participant. Multiple participant can share. Dual monitors recommended. Okay. ठीक है प्रद्युम्न, देखते हैं और 2-3 आने दो मुझे. डन. गाइस फास्ट. आपका ओके. बाय द वे फर्स्ट कोड तो हो गया था, बट स्टिल आई एम जस्ट ओपनिंग द सेम स्क्रीन अगेन. डन प्रसाद, डन. ओके. फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाए सबने. कंट्रोल फ्लो जस्ट लिखना है कोड का ही, तो मत लिखो. यू वोंट बी एबल टू फाइंड योर ओन कोड आफ्टर मे बी कपल ऑफ सेशंस. क्यों? बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे, आपको पता नहीं होगा. हर कोड नया लिखो, हर कोड, so that whenever you are going for the interview you will have all this material ready. You just need to open and understand that material. मैं खुद लिख रहा हूं तो देखो कोड कैसे सिस्टमेटिकली लिख रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यू को जाते टाइम ये कंसेप्ट समझना है. ओपन करो, एक्सपेरिमेंट करो, इंटरव्यू को जाओ. नॉट ओनली दिस, इट्स ऑटोमेशन, एवरीथिंग.
I got 2 डन. I am expecting 5 डन. उसके बाद अपन देखते हैं कोड फिर. 5 डन आने चाहिए मुझे. डन 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 तो और 2 4 हो गया और एक डन चाहिए मुझे. डू वी हैव अर्चना टुडे? अर्चना दिखी नहीं मुझे. आई डोंट सी अर्चना. और कौन मिसिंग है? आई थिंक ओनली अर्चना इज मिसिंग. ओके, 5 डन आर. चलो 5 डन हो गए. सो who would like to share? Who would like to share? Anyone can share. I'm just stopping the share. Anyone? Let's go with who is last one. Let's go with the last one. Lalita, would you like to share your code? No, actually, I'm joining with mobile, and then Okay, fine. So you need to switch to the okay. You are doing Yes. on laptop and you are video Yes. connected with mobile. Yes. Okay. Mahesh, that's fine. That's fine because sometime like you get a good bandwidth on mobile. You connect through mobile. That's fine, and you can use the laptop for the coding purpose. Fine. Mahesh, you would like to share? Yes, karo share karo. Okay. Okay, so this is something which you need to understand. Okay, so what Mahesh has done. Okay, int 7. Okay, int 7 if I is equal to 7. Else, now the thing is we don't have only 2 bank. We have multiple bank, right? Okay, so he has written like no interest rate available as well. That's a really good condition he has put. Look at line number 27. Okay, and look at line number 14. It's a else app. This is a trick. We can use if else as it is, or there is a provision provided by Java where we can have multiple condition. If, else if, and then else. Okay, so this is also a good option to write the code. Okay, and by this code you can have more than 2 condition. if में क्या होता है? if में एक कंडीशन सेटिस्फाइड तो वो एग्जीक्यूट होता है, else दूसरा होता है. बट मेरे पास तीसरा कंडीशन भी है ना, राइट? मेरे पास तीसरा कंडीशन भी है. नाउ द प्रॉब्लम इज 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. Then you can use this approach. Mahesh, copy paste this code into the chat channel. Rest of the guys, please complete it. Okay, complete code with okay. Good work, and you are following all the package structure as well. Okay, so good. Just copy paste over the chat channel. Thanks, Mahesh. You can stop sharing. Okay, hold on. We'll spend on this time as well, but prior to that I will move to the next point. Next point, that is for loop. Okay, so Mahesh stop किया sharing? हाँ ठीक है, आ गया. अभी मैं फिर से शेयर करता. Guys, if you are thinking that अरे यार मैं पीछे रह गया, hold on. मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रेक देने वाला हूँ. ब्रेक पे आपको इनफ टाइम भी मिलेगा. The next code is for loop. Okay, so let's try to understand the for loop or the switch name for loop. Okay, so for loop, देखो for loop क्या है? for loop बोलता है पहले initialization, condition, statement, increment, decrement. अगर स्टेट कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से
रिपीट होगा लूप, फॉल्स हुआ तो एग्जिट होगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। मुझे तो नहीं समझ, मुझे तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं समझ में आ रहा है ब्लॉक डायग्राम। इसका कोड में कैसे देखते हैं, इस कोड में देखते हैं इसका कैसे लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है फॉर लूप इनिशियलाइजेशन। ओके, ये है इनिशियलाइजेशन। मतलब अनिल, डिड वी सी द एनी इनिशियलाइजेशन? ये इनिशियलाइजेशन आपने ऑलरेडी देखा है। इसको बोलते हैं, ये देखो मैं डिलीट करता इसको, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल विथ नेम एज I. Let me repeat. I have declared a variable with name as I. I is a, उसको उसका नाम रखा है मैंने, और मैंने उसको वैल्यू असाइन की, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ओके, तो ये इनिशियलाइजेशन करना है। ओके, कंडीशन देनी। ओके, कंडीशन पता है मुझे, 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, 1 is less than 2, 1 is greater than 0। ओके, ठीक है, ये समझा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, डिक्रीमेंट 8 देन 7 देन 6। ओके, कब यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, कैसे, वो बाद में। पहले इसको मैं इंप्लीमेंट कंट्रोल फ्लोज में नया बोलता, एक कोड माय क्लास बनाता, माय फॉर लूप। ओके, ये मेन मेथड डाल दी। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू राइट द फॉर लूप। ओके, सो फॉर, अरे कोई इसने बोला है मुझे, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे को सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। फॉर, ओके, मैंने एक डाला आई एन टी, आई इज, कहा गया है, आई इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन, आई इज लेस देन 10। ओके, कंडीशन हो गया। मैं इसको और स्पेस देता ताकि आपको दिखे अच्छे से, समझ में भी आए क्या कर रहा हूँ। ओके, ये ब्रैकेट, ये स्पेसेस नहीं चाहिए, बट ये समझने के लिए लिख रहा हूँ। और क्या करो, आई प्लस प्लस करो। इसमें मैं आपको डिबग मोड भी सिखाऊंगा अभी, इक्लिप्स का डिबग मोड। हाँ, सिस आउट, इसको बोलते हैं वैल्यू इज, वैल्यू इज इक्वल टू प्लस आई। ओके, मैं इसको प्रिंट, पहले तो मैं इसको रन करता, ये कौन सा इंपोर्ट हो गया, सिंपल कोड, वेरी सिंपल कोड, फॉर लूप सेव करता पहले, ऑल रन। देखो क्या प्रिंट हुआ है, वैल्यू इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 10 didn't print because it's a less than 10 है। तो क्या हुआ अनिल, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा क्यों प्रिंट हुआ? सिस्टम पे एक ही लाइन लिखी है, प्रिंट 10 बार हो रहा है 0 to 9। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस थरोली, यस इवन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस थरोली। देखो मैंने 8 के बाजू में ना डबल क्लिक किया, इसको बोलते हैं डिबग मोड। ओके, डिबग मोड, डिबग मोड बोलते हैं। डिबग मोड में क्या होता है, कोड 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है। ओके, ये ऊपर जा, इसको ऊपर भेजना है यार, कैसे जाएगा ऊपर, चलो कोई बात नहीं। एक हमेशा अपन रन एज कर रहे थे, मैं डिबग एज करता। जावा एप्लीकेशन क्या होता है देखते हैं। कहाँ गया, कोई नहीं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा कुछ, तो टर्मिनेट करता मैं, टर्मिनेट किया, रीरन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ ऊपर का दिख नहीं रहा है। ओके, डिबग एज जावा एप्लीकेशन चलना चाहिए, चल तो रहा है, कुछ तो इशू हो रहा है। ओके, चल रहा है, चल रहा है। ओके, आ गया, हाँ, नाउ यू कैन सी डिबग मोड। अगर आप देखोगे ये राइट टॉप कॉर्नर पे एक डिबग का वो जो कीड़ा है ना, वह है एक्टिव, पहले अपना जे पे था, अब ये डिबग का आइकॉन आया है। ओके, ये आप नहीं करने वाले, ये बाद में देखेंगे, बट मैं दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहे हैं, आपको सिर्फ फॉर लूपिंग है। नेक्स्ट होता है, देखो यहाँ एक 2 एरो है, इसका स्टेप ओवर, स्टेप ओवर मतलब नेक्स्ट स्टेप को लेके जाओ। स्टेप इनटू मतलब गो इनसाइड ऑफ दैट कोड, वी डोंट वांट टू गो इनसाइड, आप जेवीएम में चले जाओगे। आई जस्ट वांट टू स्टेप ओवर विद द नेक्स्ट लाइन, मतलब क्या है, F6, मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ। क्या होता है देखते, पहले तो चीज माउस ओवर करते हैं, इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं, माउस ओवर में देख रहा है उसका वैल्यू क्या है 0।
इसके ऊपर माउस और करते हैं, इसका वैल्यू क्या है 0। ओके, ये आए तो ऑब्वियसली वही रहेगा। उसके बाद F6 एक बार क्लिक कर रहा हूं, देखो 0 प्रिंट हुआ। ये फिर से लूप में चला गया। क्यों लूप में चला गया? ये से कंडीशन चेक करने जाऊंगा अभी मैं। कंडीशन क्या है? 0 के बाद क्या किया मैंने? 1 किया। 1 अगर छोटा है 10 से, छोटा है ना, ट्रू है, तो प्रिंट कर दो स्टेटमेंट। वही कर रहे हैं अभी अपन। मैं फिर से F6 प्रेस कर रहा हूं। अभी क्या है? आई की वैल्यू दिखता। कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आई की वैल्यू असाइन होती है, मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद। तो मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ, आई की वैल्यू क्या है? 1। अभी 1 प्रिंट होगा। कौन कर रहा है? ये बढ़ाने का ये काम कर रहा है, बढ़ाने का। ये कंडीशन चेक करने का काम कर रहा है। और जो स्टार्ट में जो वैल्यू असाइन हुई, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये उसने की। अभी देखो ये कितना हो गया? 2 हो गया होगा। ओके, मुझे लगा यार ये होता है डिबगिंग। डिबगर हटाया, मुझे लगा कि कंटिन्यू कर देना है कोड, तो कंटिन्यू कर दो। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट पे रुकता है हमेशा, एक एक प्रिंट हो रहा है। देखो मुझे लगा कि मुझे डिबग नहीं करना, मेरा कोड खत्म हो गया, मेरा मैं समझ गया हूँ। मैंने डिबगर हटा दिया, डबल वो डॉट पे डबल क्लिक कर दिया, रन कर दिया, ये देखो सब प्रिंट हो गया। इसको इग्नोर करो, मेरे जावा में सेटअप में कुछ तो इशू है। बट दिस गॉट प्रिंटेड। ओके, मैं फिर से इंडिविजुअल रन करता। ओके, सो आई एम एबल टू प्रिंट। दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क। ओके, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, ये कोड आपको कंप्लीट करना है। आपको ये कोड कंप्लीट करना है। ओके, एंड देन यू हैव एन असाइनमेंट। आपको ये वैल्यूज कैसे प्रिंट करके दिखानी है? फाइल न्यू, 1 मिनट। हाँ, आपको और एक फॉर लूप लिखना है। इसके बाद असाइनमेंट, और ये सारी चीजें अपन ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ऐसा आना चाहिए 0 3 4 स्पेस 9। फॉर लूप रन करने के बाद 1 8 2 7 3 6। इस सीक्वेंस में कहां तक प्रिंट होना चाहिए? यहां आएगा 9 और 0। मतलब ये असेंडिंग है, तो ये डिसेंडिंग में एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए, एक ही लाइन में। यह असाइनमेंट भी, ये कंप्लीट करने के बाद कोड। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? यू थिंक ऑन दिस। एंड ये असाइनमेंट भी आपके सामने रखा है मैंने। ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ क्या रहेगा? 4, यहाँ रहेगा 5। ओके, ये कंप्लीट करना है आपको, डॉट डॉट करके ये कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ आउटपुट मुझे प्रिंट करके दिखाना है वंस यू आर डन विद दिस असाइनमेंट। एंड देन वी विल टॉक अगेन कि फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट ऑटोमेशन में कैसे यूज होते हैं। क्लियर गाइज? ठीक है, ओके। एंड वी आर टेकिंग ब्रेक एज वेल फॉर 10 मिनट। तो आपको ये कोड भी कंप्लीट करना है, 10 मिनट का ब्रेक भी लेना है। सो वी विल बी बैक बाय 10:25। 10:25 को कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट? एनीथिंग दैट यू नीड फॉर नेक्स्ट 15 मिनट? एनी डाउट? आपके पास बहुत काम है अभी। इफ एल्स का भी, वो जिसका बचा है उनको वो भी लिखना है, एलसिफ एलसिफ वाला। उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे लिखना है। वो कोड तो ऑलरेडी है, ये भी करना है। एक इफ एल्स फॉर लूप के असाइनमेंट भी आपके पास। ठीक है, ऑल गुड। मैं ब्रेक ले सकता हूँ? मेरे पे कोई डिपेंडेंसी? आप भी लो, मतलब कोई बात नहीं करना। सब बिजी हो गए कोडिंग में, या चले गए, ब्रेक ले लिया। आई थिंक सबने ब्रेक ही लिया होगा, दिख नहीं रहा। कैन यू हेल्प विद? यस अंजू, चलो। अंजू, एक ऐसा करते हैं, एक 5 मिनट इनको कोड लिखने दो। वी बोथ विल बी बैक बाय 10:15 to 17। Okay. ठीक है, और फिर Okay. अपन दोनों कनेक्ट करके, क्योंकि इनका कोड भी हो जाएगा और ये बाकी का चीजें कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड देन विल डू द इंस्टॉलेशन फॉर यू Okay. इन Okay. लाइक 5-10 मिनट। ठीक है, Okay. Okay. ओके, हाँ चलेगा। एनी मोर डिपेंडेंसी ऑन मी? एनी अदर डिपेंडेंसी ऑन मी? नहीं, राइट? ओके, चलो कंटिन्यू करो। और मैंने असाइनमेंट भी दिया है, ये फॉर लूप का ऐसा उल्टा प्रिंट होना चाहिए, एक ही रो में सेम टू सेम। ये अभी वैल्यू इज निकाल दो, बट ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, ओके। असाइनमेंट आपके सामने, कोड आपके सामने है। मैं सिर्फ म्यूट करता, वीडियो भी म्यूट करता, आवाज भी म्यूट करता।
No, Vikrant, no, I don't want that. I want in the fashion which I mentioned actually. Done. Okay. Done by Pradyum. ऐसा कुछ चाहिए मुझे. By the way, Anju, you there? Guys, you can take a break. Done. Prasad is also done. Anju, you there? Can we talk? Other guys, please take a break for 5 minutes now. You have 5 minutes. Hey, Anju, can you hear me? Yes, yes, I can hear. Yeah, so you can share your screen. Let me see what's going wrong. I hope you have downloaded both the setup. Just a minute. Can you see me Okay. now? Yes, I can see it. Uh, Click it on close. You're already done with the installation of Java. Perfect. Okay. Now you need to open the same setup where you have downloaded the Eclipse. This is the Okay, so shortcut, right? no. Have you done with the installation? I wanted to see your downloaded that Download. setup. Just go to the download. Mm, Let's organize your first all the setups because we are going to download a lot of different things. okay. Just open Explorer, that Windows wala. No, fourth icon, fifth icon. No, you go to on your Windows folder, your home drive, C D drive, whatever you have. Okay, go to that. Where is your download? Go up onto the left bar. No, go up. Cursor, that's scroll bar. Go up. Downloads is there. Just below that. Correct. So you must have downloaded. See, I see two files. Copy those file Eclipse and Java. Copy both the files. That This one? this one and the JDK one as well. Copy both the files. Select both the files. By pressing Control, you can select both. I don't want to keep this file over here because you might need this in future as well. Okay. Okay.
Just last, okay, just two only. I just want two. These two files, this and below that. Okay, copy it, copy it, Okay. copy it. Which drive has the maximum space? C, D on your machine. D drive. Go to D drive. Okay, create a new folder. Create a new folder here. New folder. Give name Radical Softwares without space. Without space. Software. Correct. Double click. Correct. Go inside. Paste here your two file. Just hold on. Okay. Now click on the first icon, Eclipse. Double click. Let's do the installation. Okay, so why I have copied this file over here, over the period of time, as we will be downloading lot of different software tools, technologies, jar, even code, you should be aware like what you did or you did use all the softwares. Okay. And for that, this will be easy for you to understand as well, like over the period of time, what you have installed. Okay. Okay, so whatever I'm going to provide, just maintain this folder. Click on first Okay. icon, click Eclipse ID, correct? Click on that. Click on install. Accept. Okay, for rest of the guys, how many of you are able to complete the assignment? If you are done with the assignment, please do ping that you are done with the assignment. I see Pradyumna and Prasad has done with the assignment. What about others? So you already had Java JDK 18, You already had that. Okay. You installed now. I got the result as Vikrant. Okay, Radhika. So we'll refine that result. We'll define that result, but my expectation is a little bit different. Java 18, Anju, you installed JDK 18 and JDK 18 I think my kid has done that, so Oh he's my God. almost. Kids know Java. That's. Okay. Competitors are already in the market. No worries, we'll downgrade that as per our requirement because Java 18 is not supported for all the things that we are going to cover in this course. Java is a very latest, 18 is very latest. We'll use 8 and 11. Can I maintain both of these? Is It's there possible. problem? It's possible. We are not Okay. going to uninstall. We'll just point it to the Java 1.8 Okay. for some time and then we'll upgrade to 11. Okay. Okay, so have patience and maybe you can visit this recorded session, today's recorded session to write the code as well once we are done with the installation. And if you have any Okay. doubt, I have already shared my number, ping me, call Okay. me. If you have Okay. any doubt, just get in touch with me. We can Yeah, discuss sure, more. sure. Or even Okay, sure. I'm available after the today's class. If something Okay. needs to be talked, discussed, we can talk. Okay. What The about same procedure like Windows, like JDK also, right? You had to install both right now. JDK? You already installed, right? No, I you think installed when I like you shared your screen. You were on the screen where JDK was installed. We will visit anyway. Okay. Okay. Let's go on to the C drive. Let's see which JDK is available. Let's go on to the C drive. C drive. Go to the program files. C drive. Program files. Your C drive is almost full. Okay. Java. Full. Java. Okay. Up. Double click. Okay. See. These many Okay. Java you have installed and the Java which I gave you, that's the first one, Okay. JDK 1.8. Okay. Now, Okay. how about others? Because other Javas are also installed. We'll point out to 1.8 only. Let's see. This 3 folder is no need for me anyway, right? Not required. Not required. Okay. Not required. But keep it if your kid needs those advanced guys. Alpha generation.
These are Okay. those guys need those Java. Okay. 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 Let's open that Eclipse installation. Right bottom. No, it's in the task manager. Installation. That correct. Launch. Click on launch. Okay, so this is what like your installation is done, and the icon must be created on your desktop, which will look Right. like the similar way what you are seeing on the screen. Okay. Okay, so just remember this workspace location, users, admin, Eclipse workspace. If you want, you can create the other workspace in the drive of, but I would say let's go ahead with this one. Click on launch. Okay. Click on launch. I will make sure that I click continue. Okay, you had other older Eclipse as well, you know. Oh, I think all these things my kid has done. I'm not sure. So how old He he is or in she? grade 9. Grade 9. Grade 9, and he know Java. Yeah. Yeah. Guys, I think we have yeah. 9+ years of experience, and we are still starting with Java, and the kid is 9 year old. Okay, so see guys, market competitors are already getting prepared in the market to compete with us. Okay. We need to be, better prepared. Okay, so click on this close, sample close. Okay, your that Eclipse workspace. Click on that. What's working here? Yeah. Just just need to open this. Close this website, and you just need to hit that circle icon on the bottom. Correct. That's the yes. Full screen. Make it full screen. Okay. Close. Click on that close sample. Close sample, which is at the center panel. Correct. Center sample.c. Sample.c up little bit up on the left side. Up sample.c. Correct. Okay, it's closed. Now click on file on the left top panel. Click on file. Okay, click on new project. Okay, uh, this is like wizard. Select wizard. Click on general. Expand general or Java. Expand Java project. Click on Java project. Next. Okay, give project name as Radical Java. Radical Java. Can you type? Yeah, Radical Java. No space. Okay, fine. At the bottom, you can see that module checkbox, module create module info.java. Uncheck it. Generate document. Uncheck it. Okay, click on finish. Okay. 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 So why it's again coming? Correct. Okay. Open perspective. Click on open perspective. Correct. Okay. On the left side, on the left panel, expand Radical Java. Correct. Expand it. Double click. Go to the SRC. Right click. SRC. Right click. Close this one. Close this one. This got accidentally open. You just close this one. This right. Yeah. Okay. Correct. Right click on SRC. New. Package. Okay. Control flow. Control flow without space. Correct. Finish. And now you can follow how to create the Java class. Fine. Okay. Give some time. Maybe after the class we will cover this as well. Fine. Okay. 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 Just stop sharing your screen. Okay. Okay. Let me share my screen. Okay. So guys, let me check the chat channel. I got the result as Vikrant. So I see Prasad and Pradyumna has done the
printing of the things in that fashion. So let me do that. So, you know, this is the initialization part. I can go ahead and have multiple variable declared as well. That's possible. J is equal to 9. Okay. J is having the 9 value, and I will go ahead J minus minus. Okay. Now what I will do, I will print I will print I first, control X. Here I will go, I will say plus V spaces and then J. Okay, so let's see what happens. Now two variables are getting initiated or initialized. I is equal to 0, J is equal to 9. J will be decremented, I will be incremented, and both the things will be printed in the same line. What this double quotes means, double quotes and this plus symbol, these are the concatenation. I will talk about this concatenation later on, but this is just a syntax to put some spaces. At this moment, just remember this. Concatenation, connecting two things in Java. It can be integer, it can be string, it can be any data type. Let me save it. Let me run it. Let's see. Vikrant, all good now? Okay, so this is something which you can do as well. I want to hear from everyone that you are writing the code for all the things that we have discussed. If anything is not done, please even put that thing that you are pending with this program. Okay, we'll complete those after the class. Few things will be the assignment as well. Clear? Yes. Okay. Okay. Okay, so चलो ये प्रोग्राम कंप्लीट करो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था. ओके, सी मैं क्या करूंगा पता है, ऐसा लिख के लूंगा. मैं ये दो प्रोग्राम बनाऊंगा इसके. ये देखो, पहला प्रोग्राम जो था वैसे रखता, ताकि मुझे रेफरेंस के लिए मुझे चाहिए नहीं. ओके, एंड क्या हुआ, जे चला गया, पूरा ही चला गया. ठीक है, ये प्रिंट आई कर रहा हूं. ओके, एंड कमेंट कैसे करते हैं इसमें, ऐसे. ओके, फर्स्ट फॉर लूप and this one would be my second for loop. ओके, मैंने लिख लिया, मेरे समझने के लिए लिख लिया. इसको बोलते कमेंट. और कोड एकदम नीट लिखो, एक के ऊपर एक ही क्लास में सारे कोड मत लिखो. मैं खुद यहाँ अलग क्लासेस बनाने वाला हूँ, तो आप भी बनाओ. एंड रन करता, रन एज जावा एप्लीकेशन. नाउ आई कैन सी बोथ द कोड. अरे क्या, ओके ओके, सो बोथ द कोड्स, बट वो बहुत एक एक लाइन में लग रहे हैं. तो मैं क्या करता है, इसके बाद है ना, सिस आउट, यहाँ जाता और यहाँ ऐसी लाइन डाल देता बस. सेव. ठीक है, ये ऐसा कुछ अच्छा दिख रहा है अभी. अरे ये हर एक के बाद आया, गलत हुआ लाइन, गलत जगह डाला, बाहर डाल देता. देखो, मैं खुद का कोड अच्छा लिख रहा हूँ, मुझे पता है जावा कैसा है. फिर भी आपको जावा अगर पता नहीं है तो अच्छा कोड लिखो, आदत तो डालो. And is my font on the screen is okay? Everybody can read that? या बहुत छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? Okay, so do let me know if you see any problem with the font as well. Yes, we can read. Thanks ललिता. क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ना आप कौन से स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या चल रहा है. ओके, एंड ओके, आपका पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज करना है ना. देखो, ये पर्सपेक्टिव होता है जावा, जहाँ कोड लिखा जाता है. मैं जावा पे जा रहा हूँ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ डिबगर मोड ऐड हो जाता है. वी कैन इग्नोर दैट एज वेल, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, बट यहाँ चेंज कर सकते हैं पर्सपेक्टिव. Anju, maybe you can start writing the code as well.
if you are comfortable, else we can wait. मेरे दोनों फॉर लूप सिस्टमैटिकली लिखे हैं एंड आई कैन एटलीस्ट रेफर दोज. Okay, sure, Anju, no problem. Guys, anything pending till this point other than Anju? Okay, and the one who is actually using the phone since she joined first time. Those are actually having the setup and able to run the code. Are you done with all? Not yet, Surbi. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. But और कौन है? मुझे 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 पता कैसे चलेगा कि आगे बढ़ना है, क्या करना है, कौन पीछे है, कौन आगे है? एनीवन पेंडिंग? पेंडिंग वाले बता दो मुझे. Surbi is pending with something that I came to know. Supriya is also pending. Take your time. Take your time. ओके और जो पेंडिंग है मैं उनके लिए क्लास के बाद भी बैठूंगा थोड़ा टाइम. ओके, फॉर लूप के ये दो कोड लिख लिए, लिख लो. ओके, मैं कॉपी पेस्ट करता ये दोनों फॉर लूप. ये देखो यहां से कॉपी करने का ये पहला फॉर लूप एंड मैं सबको शेयर करता है. ओके, और ये दूसरा फॉर लूप. मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा, ये बाकी का क्लास पैकेज फोल्डर कुछ भी नहीं कर रहा. ये आपका खुद का होगा ना, वही यूज करना है. सिर्फ फॉर लूप का कोड दोनों फॉर लूप का कॉपी पेस्ट कर दिया. Sir, while I was trying, I once went in infinite loop. So how to stop that running? आपको है ना एक रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स आ गया होगा. आपको ये देखो, ये स्क्वायर बॉक्स आ गया होगा. इसको इसको क्लिक करना, ये रेड हो जाता है. ओके, वैलिड क्वेश्चन. Why there is no condition for J? J का कंडीशन क्यों डालने की जरूरत है? मुझे कितनी बार चलाना है? क्योंकि the reason is I know how many times I need to run and that numbers are 10. So there is no point to put another condition. Ultimately, even if there is one condition which is going to rotate the loop for 10 times, that's sufficient for me. So that's why I don't need a condition. Condition is just to check one condition or other condition. That's fine. One condition is satisfied and that is going to run for 10 times. I will make sure that my J variable is also defined, means initialized for 10 times. I चेक कर रहा है और प्रिंट I और J दोनों कर रहा है, डिक्रीमेंट दोनों कर रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. कंडीशन तो सिर्फ एक the way, there is a way, that's the only way ki you want to check something, but ultimately the operations are going to happen on I and J. Okay, so for those guys who are still working on for loops, the first program, please show how to run it. It's not showing at my end how to run first program. Once first one, concatenation concept is not clear. Okay, fine. Concatenation concept के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ. Concatenation concept क्या होता है? Okay, so give me some time. क्योंकि क्या होता है concatenation concept, हर एक बता रहा हूँ. पहले क्लास बताया, फिर लूप्स बता रहा हूँ, concatenation का concept भी बताऊंगा मैं. ठीक है, सेपरेट प्रोग्राम में बताता. जस्ट गिव मी सम टाइम बस, क्योंकि एक कंसेप्ट बताने के लिए मुझे और भी कोड लिखना पड़ेगा. So, फर्स्ट प्रोग्राम
how go run, it's not showing at my end. I didn't get Surbi. I didn't get you actually. First program is this one. First means this one. और if else वाला. Okay, यही होगा शायद. Show how to go run. फर्स्ट नहीं, एक नहीं रन कर सकते, पूरा प्रोग्राम ही रन करना पड़ेगा, पूरी मेन मेथड ही रन होगी. एक आप बोलोगे मुझे सिर्फ इतना रन करना है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. You have to run the entire program, and this entire program means you are actually running the main method. Okay, so I hope I answered your question. एक नहीं हो सकता रन, दोनों रन हो गए. तो हाँ, कमेंट कर दो, इसको कमेंट कर दो, इसको कंट्रोल फ्रंट स्लैश दबाओगे ये कमेंट हो जाएगा. इसको रन करो, पहले चेक कर लो चल रहा है. ओके, चल रहा है, 0 to 9 आ रहा है. कमेंट कर दिया था पहला सेकंड वाला. फिर उसके बाद इसको अनकमेंट करो, कंट्रोल फ्रंट स्लैश, और इसको कमेंट करो, कंट्रोल फ्रंट स्लैश. ओके, एंड रन इट. ओके, आ गया, सेकंड कोड रन हुआ. बाय दिस वे यू विल बी एबल टू रन इंडिविजुअल पीस ऑफ कोड, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा. मैंने दोनों अनकमेंट रखे हैं, कंट्रोल फ्रंट स्लैश से कमेंट हो जाते. ओके गाइस, लेट्स मूव. होल्ड ऑन, आपका प्रोग्राम वही छोड़ दो, आपका प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे अपन क्लास के बाद. बट ओके, क्योंकि जो लोग पेंडिंग है उनका कोड एक के बाद एक अपन देखेंगे, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट कोड इज दिस वन, स्विच स्टेटमेंट. जस्ट ट्राई टू रीड दिस. मैं कोड नहीं लिखूंगा इसका, क्योंकि इसका कोड मुझे ही लिखने को 5-7 मिनट लगेंगे, बट वी विल प्ले अ गेम. I want to understand like how you are thinking by looking at this diagram now. क्योंकि you already know for loop, you already know if else. Now you are going to tell me what is going to happen for switch statement with the existing code. Okay, game खेलने वाले game. I would look for your answer on the chat channel. Okay, so take 1 minute to understand this diagram. Switch statement क्या है? Switch, if is a statement, for is a statement, और वैसे ही switch is a statement. Control flows का, ठीक है. Let's spend a minute to read this slide. Okay. ठीक है, you need more time. Switch expression है, condition नहीं है, expression है. पहली चीज, condition मतलब क्या होता है? I is less than 10, I is equal to 0. That's a condition. Expression है, expression में क्या है? Anil is a expression. Okay, color is a expression. Okay, ठीक है. Case 1, value 1, इस expression की value 1. कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड में क्या रहता है? कुछ भी. system.out.println फॉर एग्जांपल. ब्रेक, ओके, ब्रेक मतलब होता है कि जहां से करली ब्रैकेट चालू हुई है वो जो भी आएगा उसको ब्रेक कर दो और बाहर निकल जाओ. ओके, इसका मीनिंग, ब्रेक का मीनिंग होता है. देखो यहाँ भी लिखा है ब्रेक मतलब इन शॉर्ट ये करली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुई है, नीचे एंड हुई है. अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो हम करली ब्रैकेट के बाहर निकल के उसके नीचे वाला कोड स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करना. ओके, अगर ब्रेक कोड का नंबर आता है तो. सो केस 1 के बारे में बात की, केस 2 भी सेम दिख रही है और एक डिफॉल्ट केस है. विल बी एग्जीक्यूटेड इफ नो केस इज मैच्ड. लेट्स ट्राई एंड हैव द एग्जांपल. सपोज एक्सप्रेशन इज अनिल, ओके, एंड वैल्यू 1 इज प्रसाद. इज अनिल मैचिंग विथ वैल्यू 1? नहीं, अनिल नहीं मैच कर रहा. दूसरी वैल्यू मे बी सुप्रिया, तीसरी वैल्यू प्रद्युम्न, चौथी वैल्यू प्रिया, पांचवी वैल्यू अंजू,
अनिल जब तक मैच नहीं करेगा किसी केस को, बोलते हैं ना अपन केस बाय केस जाते हैं, तो कौन ये केस बाय केस ही जा रहा है। अनिल केस है तो अनिल का केस वाला ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, जहां लिखा है अनिल का केस में लिखा है अनिल इज अ ट्रेनर, और फॉर अदर वैल्यूज इट्स लिखा है कि प्रसाद इज अ स्टूडेंट। अनिल के केस में वो ट्रेनर हो सकता है, ये स्टेटमेंट हो सकता है, ये स्टेटमेंट के बारे में बात करो। जब अनिल का केस मैच होगा तो प्रिंट होगा अनिल इज अ ट्रेनर। बट अगर केस कौन सी है, दूसरे किसी की, सुरभि की केस है सुरभि, तो सुरभि इज अ स्टूडेंट ऐसा आएगा, और ब्रेक होके कोड एग्जिट हो जाएगा। ओके, so let me see if I have existing code because I don't want to write and spend time on that. But अपन गेम क्या खेलेंगे, कंट्रोल फ्लोज का गेम। I want to understand your understanding. Okay, so आपने सेम टू सेम इसमें देखा, यही था जो आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा, फ्लो फ्लो या क्या बोलते हैं कंट्रोल फ्लो में देखा, फ्लो डायग्राम। ये देखो मैंने नाम लिया था, अब भी यह नंबर है 100 है, केस आई, आई मतलब ये है, आई की वैल्यू 100 है, तो ये क्या करेगा स्विच में बोलेगा 100, मुझे 100 का केस एग्जीक्यूट करना है, तो ये केस एग्जीक्यूट होगा इतना। यहां मैंने अगर किया 200 तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहां मैंने डाला 500 तो ये बोलेगा 100 का केस का कोड है क्या, नहीं है, ये मैंने मुझे नहीं करना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों नहीं मैच हो रहे, मेरे केसेस खत्म हो गए, ये अनमैच्ड केस है, तो डिफॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही ब्लॉक डायग्राम में भी लिखा है, मैंने चैट चैनल ओपन किया है ताकि करेक्ट, विक्रांत ने सही लिखा, कीप द स्विचिंग टिल द मैच, परफेक्ट परफेक्ट, यस ठीक है। मैं वही फिर से ये दिखा देता, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ओके, ये और क्लियर हो जाएगा। कोई एक्सप्रेशन मैच हुआ तो एग्जीक्यूट करो, दूसरा एक्सप्रेशन मैच हुआ तो दूसरा एग्जीक्यूट करो। ओके, और एट ए टाइम एक कोई तो केस आएगा। ओके, और ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक मतलब निकल जाओ, खत्म कर दो, ब्रेक का मीनिंग है निकल जाओ। ओके, सो नाउ 200। ओके, मैं चैट चैनल ओपन रखूंगा डिस्कशन के लिए, मैं इसको स्मॉल स्क्रीन कर लेता, टेम्पररी आउटलाइन को क्लोज करता, इसको स्मॉल स्क्रीन करता, आई वुड लाइक टू हियर योर पिंग योर चैट। ओके, सो दोनों स्क्रीन ओपन है मेरे, यहाँ कौन क्या आंसर दे रहा है ना मुझे पता रहेगा। अभी मैंने केस क्या डाला है 200, आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई बताएगा? पहले आउटपुट में आपका आपका सोच देखना चाहता हूँ कि क्या आएगा, बताओ आउटपुट क्या आएगा। इफ आई रन दिस केस 2 आएगा, केस 2। ओके, मतलब केस 2 ठीक है चलेगा, केस 2 लिखा है आपने, प्रिंटिंग 200 आएगा। ओके, प्रिंटिंग 200। एनीवन हैव एनी अदर व्यू, एनीवन हैव एनी अदर व्यू, प्रिंटिंग 200। ओके, हाँ हाँ सही है ललिता, मैं समझ गया, केस 2 ही वो एक्चुअली नंबर के हिसाब से, आई गॉट इट। ठीक है, लेट्स रन इट, लेट मी रन इट। ठीक है, एवरीबडी विथ मी सो फार 400, अब क्या आएगा, नाउ इट्स 400, प्रिंटिंग डिफॉल्ट 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 डिफॉल्ट। ठीक है, रन करते हैं, एरर। ओके, सुरभि इट्स अ प्रिंटिंग default. If cases are not matching, it will have the default viewer. Okay, ठीक है, fine. Now, okay, मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल जेड, मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, 200 डाला है, क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? आपको डायग्राम चाहिए तो मैं डायग्राम भी दिखा सकता हूँ फिर से, ये देखो ये डायग्राम है, ब्रेक स्टेटमेंट निकाल डाला है मैंने यहां से, और केस 2 डाला है, केस 2 मतलब 200 वाला है। क्या होगा, लिख रहे हैं आप लोग,
अंजू का प्रिंट आया, सिर्फ प्रिंट है 200, प्रसाद का आ गया. What about others? What you are thinking? 200, okay. फाइन, सब 200 पे हैं. बाकी लोग सोच रहे हैं अभी भी कि क्या होगा. प्रिंटिंग 200, ठीक है, रन करूं. आई गॉट इनफ आंसर. परफेक्ट. ओके, परफेक्ट. नाउ नेक्स्ट स्टेप. मेरा ये ब्रेक भी कमेंटेड कर दिया है. आपको समझ रहा है ना, दिख रहा है ना अच्छे से. मैं इसको भी कमेंट कर दिया. नाउ कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल प्रिंटेड. दो ब्रेक सेम सेम. साइली बोल रही है, साइली और महेश बोल रहे हैं प्रिंटिंग 200 ही होगा. व्हाट अबाउट अदर्स. सेम. प्रिंटिंग डिफॉल्ट. ओके, डिफरेंट आंसर. हाँ, इस बार मुझे थोड़े आंसर अलग अलग आ रहे हैं. 200 एंड डिफॉल्ट गाइज. You know, I already got 4 different answers. Printing 200 multiple times. Okay, interesting. Interesting. एक block diagram. If you want, printing 200 and 300. Okay, interesting. Okay, interesting. मैंने block diagram फिर से ओपन किए. जस्ट 1 मिनट के लिए. इंटरव्यू में कोई नहीं पूछने वाला ये, बट अपन जावा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि ना क्या बोलते हैं वो, मतलब आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए. ओके, 1 मिनट में ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन. हाँ यार, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है मुझे सारी चीज. ओके, हाँ, 200 एंड 300, 200 एंड 200. ओके, लेट मी रन इट नाउ. सेव्ड है. कितने लोग करेक्ट है मुझे बताओ. मेरे हिसाब से एक. ओके, क्या हुआ पता है क्या. ये देखो, 200 का केस था. पहला केस तो उसने छोड़ ही दिया. ओके, दूसरा केस मैच हो गया, बट वो बोला ये मैच हो गया, इसने प्रिंट किया, बट उसको ब्रेक नहीं मिला ना. वो ब्रेक बोला उसका काम है ब्रेक करना, ये सिंटैक्स है. ओके, तो उसने ब्रेक नहीं किया, तो उसने थर्ड केस भी एग्जीक्यूट किया. ब्रेक करना चाहिए. ओके, तो उसने 300 प्रिंट किया. दैट्स व्हाट. आप बोलोगे अनिल ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, आप जब नई जावा लिखोगे ना तो आप उसमें ऐसा करना. बट ये बिहेवियर जावा ने डिफाइन किया है. जैसे अपन लेफ्ट साइड पे जाना है ना, रोड के लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं अपन इंडिया में. आप लाइक कहाँ लंदन में जाओगे तो राइट साइड पे चलते हैं, लंदन में नहीं, यूएस में. ओके, ये रूल डिफाइन किया है. वैसे ही जिसने भी जावा लिखी है उसने ये रूल डिफाइन किया कि ऐसा चलना चाहिए, ये मेरा बिहेवियर है. ओके, आप बोलोगे मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो आपको नई जावा लिखनी पड़ेगी. ओके, बट 200 हो गया, 300 हो गया. हाँ, ये ब्रेक हुआ, ये यहां जाके ये एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक हुआ. ओके, नाउ नाउ सो दैट्स व्हाई दो प्रिंट हुए और कोड में से एग्जिट निकला. ओके, ठीक है. नाउ टेल मी. अभी कोई गलत नहीं होना चाहिए. अभी कोई गलत नहीं होना चाहिए. अभी मैंने चेंज कर दिया है, तीसरा ब्रेक भी हटा दिया है. बट वैल्यूज हैज नॉट मैच्ड. ओके, द रूल सेज द मोमेंट वन केस इज मैच्ड विल ट्राई टू मूव. सी, ये देखो ब्लॉक डायग्राम है. ये देखो, ये स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 पे जाता है. अगर केस मैच हो गई तो स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 पे जाता है. वो चेक नहीं करता दूसरा वाला केस मैच हो रहा है कि नहीं, तीसरा वाला हो रहा है कि नहीं. वो सीधा जंप करना स्टार्ट करता है अगर उसको ब्रेक नहीं मिला तो. ओके, सो वैलिड क्वेश्चन विक्रांत. बट दिस इज व्हाट द दे हैव इंटरनली. ऑब्वियसली उन्होंने भी कोड किया होगा राइट इंटरनली कि कैसा बिहेवियर चाहिए. तो आई होप विक्रांत यू गॉट द आंसर फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम. वो चेक नहीं करता प्रिंटिंग. ओके, थैंक्स विक्रांत. ओके, क्या था, रुको कहाँ थे अपन. तीनों ब्रेक है. कौन क्या बोल रहा है. 200 300 डिफॉल्ट, प्रिंटिंग 300 डिफॉल्ट. ओके, और 200 300 डिफॉल्ट. लेट मी रन इट नाउ. यू गाइज कैन चेक योर ओन आंसर. ठीक है, इंटरेस्टिंग बना था और इंटरेस्टिंग बना था. 500.
500 default. Why it is not printing 100? जब तक केस मैच नहीं होती तब तक वो आगे वाले केस पे जाता है, बट एक बार केस मैच हो गई, एक बार केस मैच हो गई, उसके बाद वो ब्रेक का वेट करता है। उसके बाद वो केस ने मैच करता है। इफ आई इज इक्वल टू 100 करेंगे, वो भी कर, हाँ उस टाइम चलेगा, उस टाइम 100 प्रिंट होगा। इफ आई इज इक्वल टू 100, अंजू आई एम लाइक एक्सप्लेनिंग योर कमेंट। ओके, हाँ आई अगर 100 दिया तो होगा, बट अभी 500 है, रन करो, यू फाइंड योर ओन आंसर। केस मैच नहीं हुई, डिफॉल्ट पे गया, ब्रेक ब्रेक का सवाल ही नहीं आया। ओके, डिफॉल्ट उसने प्रिंट कर दिया, केस का सवाल ही नहीं आया, मैच ही नहीं हुआ। ठीक है गाइस, दिस इज हाउ दिस इज बीइंग यूज्ड, बट दिस इज द आइडल केस। हमेशा ये ऐसे यूज करना चाहिए, रिकमेंडेड, बट इफ वी वांट we can go ahead and define as per our choice as well. Okay, but this is the switch statement behavior. Okay, so could you please start writing this code? Could you please start writing this code? Again, write a separate program, my switch statement, and write a fresh code. The way I am writing, every code is a different. कल के सेशन में एक्चुअल वेरिएबल्स बनाएंगे अपन, मेथड्स बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, और उसमें एक्चुअली जावा सीखना स्टार्ट करेंगे। जावा के कंसेप्ट लाइक पब्लिक क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के वेरिएबल्स है। ओके, एंड विल ट्राई टू कोड दोज एज वेल। ये तो ये स्विच, इफ, फॉर लूप सब में है, मतलब सारे लैंग्वेजेस में एप्लीकेबल टू सारे लैंग्वेज। ओनली थिंग इज सिंटैक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, चलो कंप्लीट करो। आपके लिए 2 असाइनमेंट है, और ये कोड तो ऑब्वियसली जिनका नहीं हुआ है मैं कंप्लीट करके लेने वाला हूँ आज ही, बट असाइनमेंट क्या है वो भी बताता, और इसका ऑटोमेशन में यूज कैसे करेंगे वो भी मैं बताता। ठीक है, बहुत आराम से जा रहे हैं। करंटली वी आर हैविंग अ स्पीड ऑफ 10-20 किलोमीटर पर आवर, बट वी विल बी मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर पेस एज वेल। अभी मैं सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि अच्छे से सेटल हो जाओ, अच्छे से सेटल हो जाओ। कि आपको मैंने अगर ऐसा बोला ना, एक एक क्लास क्रिएट करो और एक वेरिएबल डिफाइन करो, तो आपको है ना 10 सेकंड से ज्यादा ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए कि मुझे कहाँ से क्लास क्रिएट करना है। तो ये टाइम यूटिलाइज करो। सारे के सारे कोड जो भी आप लिख रहे हो, आपको नया फोल्डर बना के उसमें रिपीट लिखने। यही आपका असाइनमेंट, पहला तो असाइनमेंट हर बार का सेम कोड यू नीड टू राइट अगेन इनटू डिफरेंट फोल्डर। बट आपको पहला वाला कोड विजिट नहीं करना है, देखना नहीं, खुद होके लिखना है कोड। बस आपने जीत लिया फिर। डन, ओके। असाइनमेंट 2 असाइनमेंट दूंगा, बाकी का भी बहुत सारी चीजें दूंगा छोटी छोटी जो करनी है आपको। और आज के असाइनमेंट कल नहीं किए तो भी चलेगा, बट इस वीक के असाइनमेंट नेक्स्ट वीक में किया करो, नेक्स्ट वीक तक।
I am already spoiling your weekends. Okay, so जब भी वीक में टाइम मिलेगा वो असाइनमेंट या एटलीस्ट प्रैक्टिस करने का ट्राई करो. प्रैक्टिस इज द ओनली solution to crack the interview. Just give me a moment. I got someone call. Hello? Hello? Yeah. Anyone pending with the code? Anyone pending with the code? आपको लिखना है, थोड़े थोड़े दिनों के लिए कोड लिखना है अभी भी. ओके, 11:30 को मैं असाइनमेंट दूंगा. 11:30 to 12 जिनका कोड रन नहीं हुआ था उनसे डिस्कशन करेंगे. टुमारो इट विल बी लेंथी सेशन 8:30 to 12 फॉर एवरीबडी. ओके, क्योंकि अपना गोल अभी टारगेट करेंगे अपन. And these sessions will be recorded, so you can utilize this session again. I hope. How many of you have not done registration yet? Registration, ताकि आपको access नहीं फिर recording का तब तक. How many of you have not done registration? सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है. जो आज ऑब्वियसली आज ज्वाइन हुए उनका नहीं होगा. Didn't done the registration. Fine, and you will discuss on that. बाकी सबका हो गया है रजिस्ट्रेशन. ओके देन आई थिंक कुछ लोग होने चाहिए. Anyway, maybe we can talk to them later. ठीक है, कोड किसका पेंडिंग है? डन रजिस्ट्रेशन सुरभि. ओके, रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो रेडिकल के पोर्टल का डन कोड. ओके, रेडिकल के पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा. एक्सेस मिलेगा तो आपके रिकॉर्डिंग लिंक वगैरह वही सब मिलने चाहिए. वो कुछ एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, दैट्स फाइन, बट रजिस्ट्रेशन कर लो क्योंकि वहां आपको ये सारे वीडियो सेशंस अवेलेबल रहेंगे. ठीक है गाइस? ओके. ठीक है, आपको पहली चीज असाइनमेंट लिख लो आज की. ओके, टू एवरीवन असाइनमेंट क्या है? ओके, फिर उसके बाद आगे जाते हैं असाइनमेंट. ओके, फॉर ईच नाउ का एक लूप है, वो आपको पढ़ना है. फॉर पढ़ा है अपन ने, वैसे फॉर ईच का भी लूप है. यू नीड टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट. व्हेन आई से इम्प्लीमेंट, उसका एक कोड लिख के लाना है नेक्स्ट टाइम. ओके, दूसरा वाइल लूप का सेम. यू नीड टू रीड कि क्या होता है ये वाइल लूप, उसको समझना है और उसको कोड लिख के लाना है नेक्स्ट टाइम के लिए. ठीक है? ठीक है, उसके बाद और एक कोड, क्या बोलते हैं, एडिशन. नहीं, एडिशन नहीं देता यार अभी, इफ एल्स के बाद तो कल देता मैं. कल और एक ये आज के लिए, आज आपको टाइम मिला तो ये दो चीजें करनी. ओके, तीसरा असाइनमेंट नंबर 3. तीसरा असाइनमेंट, रीराइट ऑल द कोड. If you are pretty much comfortable with Java till this point, or you already worked quite some time, आपके लिए असाइनमेंट नहीं रहेगा थर्ड वाला. बट जिन्होंने बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम कोड लिखा है एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द सिंटैक्स एंड ऑल दोस थिंग, व्हाट यू नीड टू डू, ओके, राइट क्लिक, न्यू पैकेज. इसको पैकेज को नाम दे दो एक्सरसाइज. ओके,
जो भी लिखा है एक्सरसाइज 1. ओके, और इसमें ना सेम कोड रिपीट करो. माई इफ, माई फॉर, माई स्विच, सेम कोड. सिर्फ एक है, इस कोड की हेल्प मत लो. ओके, आपका जो भी कोड रहेगा कंट्रोल फ्लोज वाला ना, इस कोड की हेल्प मत लो. और खुद लिखो, खुद लिखने का ट्राई करो, राइटिंग फ्रॉम द क्लास नेम, ताकि ना आप टुमारो सेशन और मे बी डे आफ्टर टुमारो सेशन के लिए यू विल बी प्रिपेयर्ड in terms of what is happening or what happened in the past with my student. They spend their time to correct the things onto the screen. Why that is not happening? Because they are not doing enough practice at home. Okay, एंड क्या होता है, उससे क्या होता है, मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा होता है और उनका ध्यान वही होता है कि मुझे यार रेड लाइन क्यों दिख रही है, ऐसा कुछ चल रहा होता है उनका. यार ये रेड लाइन क्यों दिख रही है यार. और मैं इधर आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट कंसेप्ट जावा वेरिएबल, और आप स्विच प्रोग्राम में फंसे हुए हैं. ओके, क्यों है ये? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम पड़ गई, इसकी वजह से होता है. इसलिए मेक श्योर दैट यू रीराइट द सेम कोड अगेन फ्रॉम स्क्रैच विदाउट लुकिंग एट द existing code. Clear, guys? Any doubt so far? Any doubt so far? Good. ठीक है. ओके, आपको असाइनमेंट मिल गए हैं, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है वो भी बता दिया है. कोई जरूरत नहीं है कि आगे का पढ़ने की, वो सब मैं कवर करने वाला हूँ. ओके, आपको जितना है अभी उतना ही ट्राई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेते हैं. लेट्स गो बाय like taking very small step. I am telling you, there will be a time when you are not even going to understand what I told on a particular day, entire day. इतना difficult जाने वाला है, वो situation भी आएगी. बट अभी के लिए वो चीज, अगर वो सिचुएशन ना आए कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, उसके लिए ना उस टाइम आपका 100% टाइम मेरी तरफ चाहिए. और उसके लिए आपको ये सारी चीजें अभी से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, कि यू वोंट स्पेंड टू मच टाइम टू फाइंड आउट व्हाट कोडिंग सिंटैक्स आई हैव मिस्ड. ओके, सो यू डू द प्रैक्टिस, दैट इज द प्री रिक्विजिट. प्रैक्टिस ही है और जो करना है अभी आपको. ओके, नया कंसेप्ट जावा का वगैरह वो सीखेंगे तब पढ़ेंगे. ओके, आई विल मेक श्योर दैट you are understanding all the concept, but you spend time on the writing the code and syntax. ठीक है. Now let's go to the slide पे जाता मैं. ओके, आपको 2 असाइनमेंट दे दिए हैं, अभी ये लास्ट टॉपिक है आज का. दिस विल बी guys, just give me a moment, just 2 minutes. I will be back in a 2 minutes.
Hello, I'm back. Hello, everyone. I'm back. Okay, just give me a moment. Let me open the chat channel again. Okay, so what I was talking about now, see, we learn the control flows. Okay, we have the assignments as well. Now, what is our next topic? This will be the last topic for today, and I will just try to cover only two things today. Even that those are again basic thing. Let's spend a minute to read this slide. First, spend a minute. Then we will try to understand like what is written over the slide. Guys, you are with me, right? I am audible, I hope. Yes, okay, ठीक है, चलो पढ़ लो एक मिनट दो 1-2 मिनट में पढ़ लो, and then we'll try to write a basic code. What is this? I will explain when to use, how to use, explain. We'll explain those things. उससे पहले भी एक चीज रह गई अपनी, ओके, वो भी बताता. When to use this if else automation में कहाँ लगता है if else. उसके बाद for loop कहाँ लगता है. Okay, that we have not seen. First अपन वो ये देखते हैं, because it's a theory. We are just because we don't know Selenium code. ठीक है. Okay, so let me read it again. Local. We are talking about local instance static variable. Variable. अपन ने डेटा टाइप देखा था, int, string और डेसिमल, boolean. ओके, नाउ ये क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? इन 3 टाइप्स के होते हैं. ओके, लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक. इंटरव्यू पे क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर. What is local variable? A variable that is declared inside the method. You know, आपका किचन वाला जो पैन है, आपका नाइफ है, ओके, और बेडरूम वाला आपका टीवी है, that is something is local because those are specific to that method. ये देखो मेथड, इनसाइड द मेथड है ना. आप बोलोगे सोफा भी, मैं सोफा को इसलिए मेथड में नहीं बोलूंगा क्योंकि सोफा जिस ड्राइंग रूम में है दैट इज नॉट अ प्राइवेट, दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी. किचन वाला भी आ सकता है, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 वाला भी उस सोफे को एक्सेस कर सकता है. तो बेडरूम वाला टीवी, ओके, वॉशरूम, बेडरूम का वॉशरूम, किचन का नाइफ is an example of local variable. Those can be used within the kitchen. Okay. And what is the instance variable? Instance variable बोलते हैं या उसको class variable भी बोलते हैं या global variable बोलते हैं. Those are inside the class but outside the method, or those are available to all the method. A variable that is declared inside the class but outside. अनिल नहीं समझ में आ रहे हैं, ओके, कोड करके देखेंगे फिर. Is called as instance variable. Each instance object will have its own unique copy for that variable. ये तो मुझे तो समझ में नहीं आया. ओके, ये लाइन तो each instance object मतलब each की will have its own unique copy of that variable. मुझे नहीं समझ में आया. मुझे ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया. ये तो लास्ट वाली लाइन तो समझ में ही नहीं आई. इसके ऊपर बात करेंगे. प्रायर टू दैट लेट मी गो टू द if else स्टेटमेंट. ओके, कि if else ऑटोमेशन में क्यों लगेगा. ओके, if else ऑटोमेशन में क्यों लगेगा? वेरी वैलिड क्वेश्चन. if else क्यों लगेगा? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सपोज एक ये चेक बॉक्सेस है. ओके, ये चेक बॉक्सेस में क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है. ओके, ये चेक बॉक्सेस है. यहाँ लिखा है ओके, विच इज योर फेवरेट मूवी, ऐसा कुछ है.
ये क्यों नहीं आ रहा? कंट्रोल Z. ओके, सपोज लगान. ओके, देन चक दे इंडिया. ओके, एंड और कौन सी चल रहा? DCH, दिल चाहता है. ओके, तीन तीन मूवी के नाम है. आपको एक एक सिनारियो यूआई है. यूआई ऑब्वियसली ये यूआई रहेगा. ये पेज है, कोई ब्राउजर है, इंटरनेट वाला पेज है. ओपन किया आपने और आपको बोला कि ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब जो चीज हम मैन्युअली करते हैं वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए. मुझे लगान पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है. मुझे लगान पे यहां जाके क्लिक करना है. ओके, ये मेरा एक्शन करना है मुझे यूआई पे. नाउ यू विल राइट सम कोड. ओके, मैं लिख रहा हूं यहां. देखो, सेम कोड लिख रहा हूं. इफ ओके, सो पहले गलत कोड लिखता है. क्लिक ऑन लगान चेक बॉक्स. ये क्या होगा? ये जो लिखा है इसका सेलेनियम कोड लिखना पड़ेगा. सेलेनियम कोड इन फ्यूचर. हाँ, अभी जो अपने को सेलेनियम नहीं आता, ये सेलेनियम कोड अपन जाके लिखेंगे 1 मंथ के बाद. यहां भी पहुंच चुके होंगे. क्लिक ऑन लगान चेक बॉक्स, ये चेक करना है. उसके लिए सेलेनियम कोड कैसे लिखते हैं पता नहीं है, जो हम फ्यूचर में जाके सीखेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. क्लिक किया तो क्या हो जाएगा? चेकबॉक्स चेक हो जाएगा. एग्री? चेकबॉक्स चेक हो जाएगा. इमेजिन करो वहां ऑलरेडी चेकबॉक्स सिलेक्टेड है और आपने फिर से क्लिक किया तो क्या हो जाएगा? अनसिलेक्ट हो जाएगा चेकबॉक्स. आपने एक्चुअली प्रॉपरली लिखा ही नहीं कोड. आपका गोल है कि लगान का चेकबॉक्स सिलेक्टेड चाहिए. क्लिक ऑन इज अ रॉन्ग वर्ड देन. ओके, मैं बोलूंगा यहां चाहिए सिलेक्ट लगान चेकबॉक्स, मतलब सिलेक्ट करो उसे. ओके, नाउ नाउ ये मेरा पहला कोड था. अब ये रॉन्ग कोड है, पता है? मतलब ये कंप्लीट कोड नहीं. इसको कैसे चाहिए पता है कोड? इफ लगान चेकबॉक्स नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड है. ओके, देन क्या करना है मुझे? इफ नॉट सिलेक्टेड, देन क्लिक ऑन चेकबॉक्स यूजिंग सेलेनियम कोड. ओके, आया नीचे? एल्स, अगर लगान चेकबॉक्स नॉट सिलेक्टेड मतलब वो सिलेक्टेड है, यहां क्या होगा? डोंट क्लिक, डोंट क्लिक ऑन लगान चेकबॉक्स. किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ कोड लिखेगा. मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ मुझे आज यहां क्या पता नहीं है, पता है? ये कैसे कोडिंग करते हैं ना, ये पता नहीं है मुझे. ये कैसे कोडिंग करते पता नहीं, क्योंकि मुझे सेलेनियम नहीं आता. बट इफ तो सीखे हैं अपन. तो माय पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड आउट इफ दैट लगान चेक बॉक्स इज चेक्ड और नॉट, एंड देन ओनली वी विल डिसाइड कि उस पर क्लिक करना है या नहीं. अगर क्लिक्ड है तो क्लिक मत करो. अगर क्लिक नहीं है तो क्लिक करो. ये सिंपल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आवर आवर इफ एल्स स्टेटमेंट. गाइस, थोड़ा बहुत समझा कि सेलेनियम में कैसे यूज करेंगे? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं? तो ये हो गया इफ एल्स का. मैंने एक छोटा एग्जांपल बताया. बहुत सारे एग्जांपल है जो अपने को मिलने वाले हैं. सिर्फ अपने को, मैंने बोला ना, ये जो वर्ड लिखा है ना, थ्योरी जो लिखी है ना, वो पता नहीं है. बिकॉज हमने सेलेनियम सीखा नहीं अभी तक. और सेलेनियम का एक लाइनर कोड ये सारी चीजें करने के लिए. जावा ऑलरेडी पता है, इफ एल्स पता है यार. तो चेकबॉक्स सीख गए तो ऐसे एक 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 करके मल्टीपल आइटम सीखेंगे तो वही है. दैट्स द ओनली ऑटोमेशन. ठीक है, ओके, आगे बढ़ू. फॉर लूप का भी बता देता. फॉर लूप का एक बताता मेरे पास. फॉर लूप का भी एक चलो एक बनाते हैं. फाइल न्यू फॉर लूप के लिए. ओके, डोंट सेव फॉर लूप. ओके, ये टेबल है 1. ये टेबल है. हाँ, तो 3 4
यहाँ है लिंक 1, यहाँ है लिंक 10, लिंक 2, कोई ऑर्डर नहीं, और यहाँ लिंक 5। ओके, यहाँ लिखा है कॉलम 1, कॉलम 2। ओके, आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि when I say बोला है, it's like you are automating something. What you generally automate the test case. Okay, what is test case? If you are not aware, we have the session as well, but let's try to understand. Test case क्या बोलती है कि okay, वो भी लिखता मैं। Okay, log in to application, ये test case लिख रहा हूँ। Open home page, check if table displayed. Okay, click on the link present in table having number as 10 नंबर के लिंक पे क्लिक करना है। ये क्या है, ये टेस्ट केस है। नाउ माय पॉइंट इज, ये 10 नंबर कौन से कॉलम में, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब सॉरी रो में ये फर्स्ट नंबर पे बैठा है या सेकंड नंबर पे बैठा है या थर्ड पे बैठा है या फोर्थ पे बैठा है? गेटिंग? आपको तो क्लिक करना है, एक लिंक पे क्लिक करना है। हाउ आई कैन गो अहेड एंड यूज फॉर लूप, लाइक ओके, तो मैं फॉर लूप कैसे लिखूंगा? फॉर ओके आई इज इक्वल टू, सेम कोड लिख रहा हूं मैं, ऑटोमेशन को कंसीडर करते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ रोज इन टेबल। समझ रहे हैं? अरे कंट्रोल Z, ये गया क्या? अरे बहुत मुश्किल है इधर। ओके, फॉर फिर से लिखता, आई इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन, आई इज लेस देन नंबर ऑफ रोज इन टेबल। ओके, इसके अंदर आऊंगा और आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी मुझे कॉलम के सॉरी उस टेबल के रोज कैसे मिलेंगे वो बात की बात है, वो देखेंगे अपन। उस होते हैं हर टेबल के कॉलम मतलब सॉरी रोज फिक्स होते हैं। ओके, बट मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा फॉर लूप। उसके बाद मैं बोलूंगा इफ link is equal to link 10. Okay, if link is equal to link 10, click using Selenium. Okay, ये हो गया आपका if हो गया। else क्या रहेगा? कंटिन्यू, दूसरा रो, राइट? मतलब पहले मैं 0th रो पे चेक करूंगा कि ये लिंक 10 है क्या नहीं है। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, कंटिन्यू करो, फिर से जाओ, चेक करो कि दूसरा रो में लिंक 10 है क्या। मुझे मिल गई। अगर यहां भी नहीं होती तो वो क्या करता कि तीसरा रो, चौथा रो में क्लिक करता, सॉरी चेक करता, एंड इफ code finds that the particular link is there, then it will click. If number of rows are finished and there is no link, it will provide you the message कि इस टेबल में लिंक है ही नहीं। तो you can use for loop as well as if for such a type of situation. Can you see that? कि ऐसा ही कुछ लिखना पड़ता है ऑटोमेशन में। दूसरा एग्जांपल देता, आपको यहाँ कुछ सेंटेंस में कुछ एलिमेंट्स डालने हैं। यहाँ चेक बॉक्स, ये सॉरी ये यहाँ है ना, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, चौथा टेक्स्ट बॉक्स, एंड इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नेम डालने, लाइक अनिल, और उसके बाद सुरभि, श्रुति, अंजू, ललिता, ये सारे नाम डालने मुझे। ओके, आई नीड फॉर लूप विच विल स्टोर द वैल्यू एंड विच विल जस्ट गो एंड इटरेट। ओके, कि एक के बाद एक डालते जाओ, काम वही करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू अलग रहेगी। गेटिंग? सो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड एंड यूज द फॉर लूप। और ये सेलेनियम का स्टार्ट होगा ना डे 1 से है, डे 1 से फॉर ये हम यूज करने वाले। हाईली यूज्ड कंट्रोल फ्लोज आर
फॉर लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, हर चीज में, हर कोड में, हर लाइन में एक आने वाला है। क्लियर? क्लियर? कैसे यूज करेंगे हम ऑटोमेशन में? ओके ओके, तो मैं वो लास्ट स्लाइड पे जाता। ये वेरिएबल का, ओके, वेरिएबल का मैं अभी एक काम कर रहा हूं। एक ये देखो, बेसिक फोल्डर बना लिया है आपने, बेसिक में ये कोड लिखना है। बेसिक में मैं न्यू क्लास, फिर से रिपीट करता, बेसिक में लिख लिया। कंट्रोल फ्लोज में, कंट्रोल फ्लोज के प्रोग्राम जो है वो इधर रहेंगे, ये क्लोज कर दिया मैंने। बेसिक में गया, एक बेसिक का भी पैकेज बना दो ताकि हम हर फीचर का, जावा के फीचर का एक पैकेज बनाएंगे। मैं क्लास में गया, यहां लिख रहा हूं माय लोकल इंस्टेंस वेरिएबल। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, वेरिएबल्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यार मुझे क्लास का नाम, यहाँ क्लास का नाम दिखता है, मुझे क्लास का नाम देख के पता चलना चाहिए कि मुझे अगर कोई चीज रिवाइज करनी है तो कौन सी फाइल ओपन करनी चाहिए। और यहाँ नाम देते बैच नंबर, मेरी 24 नंबर बैच का 24। ये क्लिक कर दिया, फिनिश कर दिया। ओके, let me read it again. Local variables declared the inside the method is called as local variable. Let's go and try to understand. Okay, so ये तो एक मेथड है। एक और एक मेथड लिखता मैं, public void method 1। मेथड मतलब अपना रूम, किचन, having its own functionality, sys out, okay, in method, okay, a variable which is declared inside the method called as local variable. A variable that is declared inside the method called as local variable. int I is equal to 10. This is my local variable. In method value of I is equal to, concatenation की बात करेंगे अपन, मोस्टली कल ही करेंगे, कल ही कर देंगे बात, इसका फिनिश करते टॉपिक कॉन्केटिनेशन। छोटी छोटी चीजें पहले क्लियर हो जाएगी तो और अच्छा। ओके, मैंने लिखा, एक मेथड लिखी, उसमें एक वेरिएबल लिखा और आई लिखा। ओके, ये लोकल वेरिएबल हो गए। ऑब्वियसली मुझे इस मेथड को रन करना पड़ेगा, राइट? ये मैं यहां भी लिख सकता था। ओके, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ओके, तो मैंने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि अब मुझे और सिंप्लीफाइड दिखाना था आपको कि ये भी एक मेथड है, ये दूसरी मेथड है, बट ये मेथड कौन सी है? ये मेथड वही मेथड है कि जो सबसे मेन मेथड है, बट वी कैन हैव मल्टीपल मेथड, मेथड 2 भी हो सकती है यहाँ। तो ईच कंट्रोल सी, इसको मेथड 2 बना देते इसको। ये कॉपी किया, कंट्रोल Z, ये पी गया क्या, पब्लिक। ओके ओके, सेम वेरिएबल है। ओके, 20 30। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लोकली वेरिएबल। एक मेथड में भी अपन समझ सकते हैं, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल बिहेवियर। ओके, ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है। उसके इनसाइड अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ये वेरिएबल है i इज इक्वल टू 30, i इज इक्वल टू 20, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। दिस विल रिमेन लोकल। अभी मुझे बताओ, इफ आई रन दिस कोड, व्हाट विल बी द प्रिंटेड? व्हाट विल बी प्रिंटेड? जस्ट गेसेस करो। गेस क्यों करना है पता है? आप सोचते हो यार, अगर आपने गेस कर किया ना तो आप सोचते हो, और तो आप सोचते नहीं फिर। 10 प्रिंट होगा बोल रहे हैं, 10 20 30। ओके, इन मेथड वैल्यू ऑफ 10, हाँ मतलब ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू टू थिंक। कर दो प्रिंट। ओके, सो क्या, ये देखो, ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। ये कोड को कॉल ही नहीं किया है, वो तो सिर्फ रखा है। करेक्ट महेश। ओके, क्योंकि ये मेन मेथड है ना, ये कोड को कॉल ही नहीं किया है। ओके, सो ये कोड इट इज एज गुड एज, ये ऑब्सोल्यूट कोड है।
मतलब पड़ा है बट कोई यूज नहीं कर रहा। घर में बहुत सामान पड़ा होता है अपने, वो कोई यूज करे ना करे, वो कोई, वो क्या बोल रहे हो, रोल ही प्ले नहीं कर रहे कोई एग्जीक्यूशन में। ये दो मेथड मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको कि ऐसे मेथड होते हैं, तो उनका होता है कि उनका क्या रोल होता है। अभी मैं एक काम करता, int I is equal to 30. Now tell me what will be the print, what will be the print value of I. गेस कर रहे हैं, बिहेवियर तो मैं बता रहा हूं, मैं तो गेस करने को बोल रहा हूं, यहाँ कोई गलत और कोई सही नहीं है। हम कंसेप्ट समझने का ट्राई कर रहे हैं, दैट टू बाय राइटिंग द कोड, एंड दैट टू यू आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द आंसर, ताकि आप सोच रहे हैं ना क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। ओके, बाय द वे, ऐसा क्यों लगता है आपको 10 प्रिंट होना चाहिए? 10 प्रिंट होना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? Okay, maybe you guys are writing, but let me tell you, local, okay, yes, it's a local variable, but local variable will take the preference. Those are always considered, those are locally considered, correct? Those are locally considered. देखो, ये local variable, ये local variable इस मेथड को ही अवेलेबल है, इवन दो, मतलब एक बाहर एक गणेश है और घर में एक गणेश है। ओके, घर में अगर किसी ने गणेश बुलाया तो घर का आदमी आएगा ना पहले, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो ये लोकल वेरिएबल को पहले प्रेफरेंस मिलेगा जावा कोड एग्जीक्यूशन में। नाउ इफ दिस आई, ओके, आई इज, मैंने वो ये कमेंट कर दिया, अभी एक चीज नहीं दिखानी थी क्योंकि स्टैटिक के बारे में बंद नहीं बोलना नहीं था, चेंज करता, स्टैटिक वर्ड लगाना पड़ा मुझे क्योंकि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, बट स्टैटिक वर्ड इग्नोर करो। अभी क्या प्रिंट होगा? 30। ओके, करेक्ट, आप लोगों ने सुपर फास्ट, आप एक स्टेप आगे चल रहे हो। मैं कोड का कंपाइलेशन करेक्ट कर रहा था, उससे पहले आपके आंसर रेडी थे। ओके, गुड टू सी दैट, बट ये स्टैटिक वर्ड इग्नोर करो जस्ट फॉर नाउ। ओके, मैं इसका सिंपल दूसरा सॉल्यूशन भी बताता, क्योंकि मुझे 2 क्लास बनाने पड़ेंगे और मुझे 2 क्लास बना के ना आपका कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है। ओके, क्योंकि कल क्लास और ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो शायद आप बेटर पोजीशन में रहोगे, ये प्रोग्राम चाहे तो फिर से रिविजिट करेंगे। ये वेरिएबल इज लोकल, मतलब अगर ये वेरिएबल सेम वेरिएबल यहां डिफाइंड है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इधर भी आती है। देखो, इसकी वैल्यू इधर भी आती है, बट जब ये यहां आती है और उसको मिलता है ये वेरिएबल, तो वो उसको ओवरराइड कर देता है, 30 के ऊपर 10 से मेमोरी लोकेशन पे वो ओवरराइड कर देता है। और 10, हाय, कैन आई लीव नाउ? बिकॉज यस यस अंजू, वी आर ऑलमोस्ट डन, दिस इज द लास्ट प्रोग्राम, बट गेट इन टच विथ मी for any further discussion. I want you to be settled with the code by tomorrow. Okay, yeah, thanks Sanju, bye bye. So this will be always preferred value for method within the method, but this value will be always available if locally that variable is not defined. Fine. So when to use local values? When you want to provide that value to that method only, then define it. If a variable pi पता है ना, pi का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है पाई का वैल्यू, किसी को पता है? 3.14, राइट? ओके, 3.14। ओके, तो पाई अभी फ्लोट देना पड़ेगा, मैं 3 देता अभी। ओके, कंसिडर 3, फ्लोट नहीं दे रहा मैं, इंट में। तो ये जो 3 वैल्यू है ना, ये जो 3 वैल्यू, if I want every method needs to use this, because okay, I want every method need to use this value,
then I should go ahead and declare that value as a global. Okay, so let's read the global. A variable that is declared inside the class but outside the method is called instance variable. Each instance, इसके बारे में मैं कल मोस्टली बात करूंगा, और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आज नहीं करता. ओके, क्योंकि ये थोड़ा समझने को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू राइट दिस सिंपल प्रोग्राम. आई विल use this code as well tomorrow to explain you the different mechanism, object, method, and variables. Okay, for now you need to just make sure that you write this code and try to run this like how this. Okay, यहाँ ये भी आ सकता है, string yes is equal to Anil colon I. Okay, so these are also okay. Name it's ठीक है. ओके, सो आज के लिए ये कोड लिखो. अपन इस टॉपिक से कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. नया कोड है, बेसिक्स में लिखो, बेसिक्स में लिखो. ओके, बैच 24 कल डाला है, आपको जो नाम देना है दो, बट ये ऐसा लिखा तो बेटर रहेगा. एंड इफ यू वांट टू सी कि अपन कितने कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड लिख रहे जावा में, 0 कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट ही नहीं हुई, 0. और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आज तो सिर्फ सिंटैक्स सीखने, टाइपिंग में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. कैपिटल, स्मॉल, ब्रैकेट, कोट्स, डबल कोट्स, कोलन, कॉमा. ओके, यही सीखना है आज, घर जाके यही प्रैक्टिस करनी. ओके, ये पाई मत करो, इसको आई करते हैं, आई. स्टैटिक ये लिखना पड़ा है क्योंकि स्टैटिक मेथड है, जावा का एक कंसेप्ट है स्टैटिक जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं. बट अभी स्टैटिक पढ़ने के लिए भी मतलब ये सारी चीजें पता चाहिए. A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D, ऐसा कुछ चल रहा है. Where we can see the recorded session on the portal. मैं बताता, चलो इसके ये कोड लिख लो, मैं उसके बाद बताता कहाँ अवेलेबल है. सौरभ, ठीक है. ओके, मैं कल ही शाम को चेक किया कि वो प्रॉपरली वीडियो चल रही है कि नहीं, तो everything looks good. You can start looking to those sessions. Everything is recorded, so you can pause it, you can understand it, you can write the code. Okay, everything is possible. You need to spend time. Do not compete with anyone in this group. We have 80 lakh software engineer. उनके साथ कंपटीशन है, अपने ग्रुप में कोई कंपटीशन नहीं, सब सेम है. सिस्टमैटिक कोड लिखो हमेशा. Done. Okay, so guys, if you are done with this code, you understood the session, you have nothing to discuss with me, then you can drop off. Okay, just because we will see tomorrow. आपको असाइनमेंट ऑलरेडी दे दिए हैं. ओके, स्विच स्टेटमेंट का एक असाइनमेंट देता, असाइनमेंट स्विच स्टेटमेंट, स्विच कलर के लिए करना है, वहां नंबर से राइट, 100 200 300. कलर्स के लिए करना है रेड, येलो,
ब्लू, ग्रीन, ये कलर होने चाहिए। और वो जो ऑप्शन दिया ना, ओके एवरीवन, जो ऑप्शन दोगे उस कलर का नाम प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट द yellow color name as per the value. Okay, so this is one more assignment for the switch statement. Other than that, ऊपर जाके देख लो चैट में सारे असाइनमेंट है, तो you can start with those assignment. At the same time, you can write the same code again and again in different folder only. Okay, that is something which will give you the confidence of writing the code. ठीक है, जिनका हो गया है they can leave. If you want to talk to me, they can stay over the call. We'll discuss in detail then. Okay, Vikrant, chalo, bye bye. See you tomorrow. Bye, Vikrant. Bye, Surbhi. Yeah, bye, Prasad. Yes, Saurabh. Maybe catch up from the recorded video. If you see any challenge, directly ping Swapnil. Okay. Swapnil is there in WhatsApp group, so उसके साथ connect कर लेना. पहला तो सेशन मुझे दिखा, आपको लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है तो भी सौरभ को फॉलो अप लेना ग्रुप पे चैट करके, ताकि मुझे भी पता रहे कुछ प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज आई कैन एस्केलेट दैट टू द मैनेजमेंट. ओके सौरभ, चलो बाय बाय. बाय राधिका. बाय शैली. बाय सुप्रिया. Okay, so who all are still there? Okay, so either you are writing the code or you want to discuss something with me. Okay, that's what my assumption is. How can I view recorded session from portal? Okay, चलो मैं दिखा देता. ये देखो पोर्टल पे जाओगे ना रेडिकल के, तो मैंने कल रिकॉर्डिंग देखी. ये देखो, ये लाइव सेशन जो है ना, लाइव सेशन 8:32 कौन सा है? हाँ यही है. ये देखो 7 तारीख का रिकॉर्डिंग है, चालू हो गया मेरे यहाँ, चालू हो गया. ओके, सो फिर से रिपीट करता मैं. ओके, ये लाइव सेशंस में जाओगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगा. ये 5 तारीख का है, देखो लास्ट वीक का. आई नीड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फी एंड ओके मैम, डू आई नीड टू टॉक विथ एनीवन? ओके ओके, मैं बात करता, पहले मुझसे बात कर लो. मुझे ललिता, लेट्स टॉक टू मी फर्स्ट. कुड यू प्लीज कॉल मी राइट नाउ? ओके, राइट नाउ मतलब आपको और कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे सकता तो दे पाता ना. 58994485. चलो कॉल करो मुझे. अगर आप यहाँ बात नहीं कर सकते तो कॉल करो. ओके, तुरंत कॉल किया तू भी चलेगा. आई एम फाइन विद दैट. विल कनेक्ट टुमारो. ओके, बाय प्रद्युम्न.